Okay, so coming to the unit 5, that is conventional methods for aquaculture. So, what are the different methods used for the aquaculture process? So, coming to the pond aquaculture. So, this is the most conventional method used for the aquaculture process. So, there are this is pond aquaculture is one type of freshwater aquaculture where these different types of fishes are grown in the freshwater in the pond. So how this pond aquaculture is done? First, we have to like make the pond. So these ponds are produced by two methods. So two types of pond systems are there. Construction is done. First type of pond is watershed pond. Second type is levee pond. So watershed ponds which are produced from the running water. If there is a depression in the land and the running watershed is coming from the rainwater, that is when deposited in that area, that forms the pond. But levee pond system, that is produced where there is no watershed. Okay, where is no water source, running water is not there. So how it is produced? There is a hole made in the soil so that the groundwater will come to the surface and forms the pond. So two types of pond aquaculture is done, and there are two types of pond: watershed pond and levee pond system. You can see the image. So here in the first image there is a, slope like structure um, which carries the running water and deposited in the pond, so that forms a watershed pond. But when there is no running water, no watershed, then there is a hole made in the ground. That's see here, a pit is created by the excavation. Pit means a hole. So from that hole the groundwater will be deposited in the surface and that forms the pond. So when we are constructing a pond, so there are two types of pond can be constructed, we studied. So when we are constructing a pond, what should we look? We first look the site selection. So first process is this, the selection of site. So where we will start the make a pond first. So that will be depends upon the type of soil available in that area. Okay, that will choose according to the soil, the pH of the soil. I mean ସେଠି soil ର pH ଦେଖିବା, ତାର clay quality. Okay, that clay must hold the water. Okay, we can see the topography of the soil. Then water supply, whether there is water supply available or not. तो आमे जो जगह रे pond selection करिवा कि आमे let's be selecting a area for the pond, then we have to look all these things like soil type, which type of soil is available there, whether that will fit for the aquaculture or not. Then topography of the soil, water supply. So there must be like the facility of water supply, so that the pond will be always filled with water. That will be required for the growth of the fish. Then accessibility. So we must dig a pond in such a way that that must be accessible to the all human being or the laborer which are like they are the laborers which are working in the aquaculture process. And also there must be manpower. So the area where we are making a pond, that area must be have manpower for the aquaculture process, and other facilities like electricity, phone. So we have to check whether where we are selecting the site for the pond, so these facilities must be there in that site. Next is layout planning. Layout planning means how will what will be the shape of the pond, whether that will be rectangular, square or circular like this. So you have to select the layout of that pond according to the availability of space, according to the area. So this pond layout can be like, it can be series pond, or it can be parallel, or it can be radial pond. So at a time we can also build more than one pond at a time, that is known as series pond. See in the series pond, this is the image here, image for 5.4. So this is a series pond layout which shows that is three ponds. There are three ponds which are arranged in a series manner, and in this pond there is one inlet. So in there is one inlet through which the water is going into pond number 1. See, there is P1, P2 P3. So there is one inlet through which water is going into the P1. Then from P1 to water is going to P2, then to P3. And there is one outlet through which water is going out.
Okay, so in a pond system where we are making a pond, there must be one inlet for the water and there must be an outlet for the water, so that we can able to change the water at proper interval. Okay, तो ଯେତେବେଳେ fish ମାନେ grow ହେବେ, that ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ nutrient ଯେତେବେଳେ ବଢି ଯିବ, ତାଙ୍କର waste material deposit ହବ, ତ plant will the water will become polluted. So we have to change the water with proper interval. Time interval ରେ हमको water चेंज କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଇନଲେଟ ଆଉ ଆଉଟଲେଟ ସିଷ୍ଟମ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ୱାଟର ପଣ୍ଡ କୁ ଛାଡି ପାରିବା ଆଉ ଆଉଟଲେଟ ଥ୍ରୋରେ we can get out the water from that pond. So in series pond we see one pond is connected to other. Okay, P1 ରୁ pond ମାନେ ପାଣି ଯାଉଛି P2 କୁ then P3. Okay, ତ series pond ର problem କଣ ହଉଛି? P1 ଯୋଉଠି କି already ପାଣି use ହେଇଯାଇଛି by the fishes, so that water is polluted. Again polluted water is going to P3, P2. So P2 again, though after using the water, that will become more polluted, and that is again going to P3. So series pond is not that like useful for the aquaculture process. Why? Because there is only one inlet and only one outlet. So pond 1 ରୁ pond 2 କୁ ପାଣି ଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି used water, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ. We need fresh water for the aquaculture process. We can also go for another type of pond, that is parallel pond. So parallel pond is, see, this parallel pond, they are like the inlet is different for each pond. See here, P1, P2, P3. So there is a common waterway from which there are three inlets through which the water is going to each and every pond, and there is one outlet for each one. तो ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଲେଟ ଆଉ ଆଉଟଲେଟ ଅଲଗା, ତେଣୁ କାହା କୋଉ ପଣ୍ଡ ର ପାଣି କୋଉ ପଣ୍ଡ କୁ ଯାଉନି। ତ ଆମେ ଏଠି କଣ ଫ୍ରେଶ କ୍ଲିନ ୱାଟର ପାଇପାରିବା ଫର ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ aquaculture. So parallel ponds are more preferable than the series pond. Okay, there can also be another type of pond can be like produced by the human, that is radial pond. You can see the radial pond here, how they are arranged the pond. Okay, so there is one inflow, from that inflow water is going to each and every pond. Okay, those, they have a like small pond at the center and large ponds around the center. So three types of ponds can be made by the human beings. So when we are constructing a pond, we should look into the size of the pond. So size of the pond must be like that will support the nearby society. And generally the size of the pond is like it is rectangular in shape. Generally rectangular shape ही बसेजा तारो generally it is having the dimension 100 meter into 40 meter, 100 meter length and 40 meter width. So you should also look the depth of the pond. So depth of the pond is also necessary. So pond depth is generally kept at 1 meter with soil on the embankment. Embankment means आमे जो pond चारिपटे जो आमे कौन कहा जाए ताको, आमे जो हुड़ा type रो बना जाए, so that is known as embankment. Okay, so this pond must be have a width of 1 meter, sloping at 2:1 or 4:1 ratio depending on the stability of the soil. And this pond must also have the clay at the bottom, so that that will support the growth of the fish. Next we should make the embankment. Embankment means construction of dike. Dike means the structure made of earth or stone that is used to hold back the water. ଯେମିତି ଆମେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ହୁଡ଼ା ବନେଇଥାଉ ତାକି ପୋଖରୀର ପାଣି ବାହାରକୁ ଯିବନି, ତ ସେ ଯୋଉ ହୁଡ଼ାଟାକୁ କୁହାଯାଏ embankment, or ତାକୁ otherwise କୁହାଯାଏ dike. So we should also make the embankment or dike so that the water will not go out of the pond. We should also maintain a water depth in the pond. We should also construct the height, uh, design height. Okay, so these are must be kept into uh, when we are making a pond. We should also see the crest width, dike width. Dike width means that embankment width. Side slope must be there, so that the water, if the water is coming from watershed, then the from through that slope the water will go into the pond. So these are some factors which we will see before we are selecting the pond.
selecting the pond for doing the aquaculture. Okay, so we now got the pond. ଆମେ pond ଏବେ ବନେଇଦେଲେ, embankment ବନେଇଦେଲେ. Now pond has the water. Now we'll go for the aquaculture process. So there are various phases of aquaculture. After we are making the pond, we'll go for the different phases of aquaculture. It has three phases: pre-stocking, stocking, and post-stocking. Pre-stocking is before seeding. Before seeding means when we seeding ମାନେ କଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀରେ either ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଛାଡୁ କି ମାଛର ଯୋଉ juvenile stage ଟା ଆମେ ଛାଡୁ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ stocking. So before ଆମେ ମାଛ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବା, ଆଉ ମାଛ ଛାଡିବା ପରେ କଣ କଣ ସବୁ ହବ? So before କୁ କୁହାଯାଏ pre stocking management, then stocking management ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା କି ମାଛର juvenile କୁ ଛାଡୁ, then post stocking management, post stocking phase. So pre stocking phase ରେ ଆମେ କଣ କରିବା, first ଯୋଉଠି ଆମେ ବନଉଛେ ପୋଖରୀ, ଆମେ first ତାକୁ dry କରିବା. Before the water is run into the pond, we have to first dry the soil. ପୋଖରୀର ତଳେ ଯୋଉ soil ଅଛି ତାକୁ ଆମେ dry କରିବା, so that the microorganisms and other things which are present in the soil of that pond will be killed. So first we'll go for drying, then limiting. So limiting the soil is essential for correcting the pH of the soil. Okay, mineralizing organic matter. So we should also see the soil pH before we are shedding the water into the pond. Then we will see the organic material present in the soil, minerals present in the soil, different type of minerals like phosphorus, nitrogen, that is available in a proper quantity or not. So that process is known as limiting. So first we'll go for drying, then limiting. So after this limiting process, then we'll go for the management of aquatic weeds and animals. Then we'll see whether that soil contains any aquatic weeds. Aquatic weeds mean unwanted plants in the pond system. If there is any unwanted plant in the pond, then we have to remove it. And also if some insects or something is there, the animals, that we have to also look into consideration. So that we'll remove all these things before we'll set the water. So this table, there are various types of like aquatic weeds. These are name of such table number 5.2, table that contains this name of some aquatic weeds which are found in the pond ecosystem. Okay, so these are the steps which we are doing before the stocking phase. So first we'll go for drying. Okay, then limiting, then we'll remove all the weeds and animals, unwanted plants and animals from the pond system. Then we'll go for the stocking phase. So after the pond has been prepared, the desired aquatic organism fish seeds, ଆମେ ଯୋଉଟା ବି ଚାହୁଁଛେ, ଯୋଉ fish କୁ ଆମେ କଲଚର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, aquaculture କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାର either seeds, ତାର ଅଣ୍ଡା କି ତାର juvenile stage, ତାର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ juvenile stage କୁହାଯାଏ, either ଆମେ ଅଣ୍ଡା ୟୁଜ କରିପାରିବା or ତାର juvenile stage କୁ ଆମେ ସେ pond ରେ ଛାଡିବା। ତ ସେଇ process ଟାକୁ କୁହାଯାଏ stocking phase. Okay, so pre-stocking phase we will prepare the pond for the stocking, and in stocking we will allow the larva of the fish or the fish seeds or the fish eggs that are allowed to enter into the ponds. So this is known as stocking phase. Next is post stocking management. Post stocking, so after we are doing the seeding or we are allowing the juveniles or these eggs into the ponds, then what care should we take for the proper growth and development of the fishes? So post stocking management, it involves the management of feeding. ଆମେ properly କେମିତି ମାଛ ମାନେ proper food ପାଇବେ ସେଟାକୁ ଆଖିରେ ରଖିବା. Water quality monitoring, so with proper interval ଆମେ water quality ଦେଖିବା. Then fertilization of ponds, we will apply the fertilizer so that there will be no unwanted plants will grow there, and and other management practices. So after the fishes are allowed to enter into the pond, ଆମେ ସବୁବେଳେ with proper interval ଆମେ ପାଣିର quality check କରିବା, ତାର dissolve oxygen ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, pH ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ. Then we'll see the feeding of the fish. କୋଉ food ଦେଲେ there will be proper growth of the these fishes. So first post stocking management, first what we will see the feeding regime. So feeding regime is
we can supply food with proper interval in the pond, so that these fish will get a sufficient amount of food. So generally what will give, generally the protein containing food. So nowadays there in the market there are fish food available. We can directly take the fish food from the market, okay, or we can prepare ourselves by taking the locally available raw materials like rice, wheat bran, then rice mill sweepings and other materials, so which are source of the carbohydrate. ଆମେ locally ବି ତାକୁ prepare କରିବା, plus ଆମକୁ market ରେ ଯୋଉ available ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ proper interval ରେ ଦେଇପାରିବା for the proper growth of the fishes. Next, what post stocking can be done is fertilization. Fertilization means we'll apply the fertilizer to so supplementary fertilization of ponds becomes an important exercise when planktonic population, when the small plants, so when fish are growing there are also may chance that some other planktonic plants, small plants will grow in the pond, so we can apply the fertilizers and different pesticide different weedicides, so that these plants, unwanted plants and animals can be wiped out from the pond. Then we'll also see the water quality management. Water quality management, so with proper interval we'll look into the water, we'll show the dissolved oxygen, if proper dissolved oxygen is there or not. If oxygen will be the oxygen level is decreasing in the water, then that will not like allow the proper growth of these fishes. So for maintaining proper oxygen, what we'll do, we'll continuously go for the aeration of the water, so that oxygen is properly maintained in the, see these are some aeration machine. तो आमे कौन पानी रे एरेशन करिया माने ऑक्सीजन विल बी डिजॉल्व, ऑक्सीजन एयर रु जाई पानी रे डिजॉल्व होई कि रहइबो। तो जेतले माछ माने ग्रो करिबा धीरे धीरे ऑक्सीजन जेतले यूज होबो, डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर रे कमी कमी जिवो। तो आमे ऑक्सीजन को पुनी मेंटेन करिया पई कोन करिबा, प्रॉपर्ली एरेशन करिबा वाटर। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एरेटर मशीन्स, सी हियर these 5.9, these are the aerator machines which causes aeration in the soil। आमे मशीन टाको सेठी पके के एरेशन करले ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर नै के अगेन पानी रे से डिजॉल्व करिवो। तो सेही वरे आमे डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी रे बढ़ाई परिबा। वी कैन आल्सो लुक इनटू द एमोनिया कंटेंट, ओके, प्रॉपर इंटरवल रे आमे एमोनिया कंटेंट देखिया को पड़िबो। एमोनिया कोठु आसुची, फिश माने जते बेले खाद्य खाउचनी तांकर वेस्ट प्रोडक्ट, ओके, वेस्ट प्रोडक्ट तांकर एमोनिया, सो एमोनिया पानी रे मे भी इंक्रीज हेबार चांसेस अछि। तो आमे सेटा को भी प्रॉपर इंटरवल रे चेक करिबा, आउ एक्स्ट्रा एमोनिया विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द पॉन्ड। We will also check the algal bloom. So when there is more nutrient deposited in the pond, that leads to development of more algae. Algal bloom सुनिथिबो, जेतले algae बहुत develop हो जाए, पानी रो कलर चेंज हो जाए, they becomes blue in color। So algal bloom भी जदि होबो, then it is harmful for the fishes cannot grow if algal bloom is there। So we will also look into the algal bloom, and we'll we have to see the algal bloom। Then other factors which are required for the management, like prevention of cultivated species being eaten by the predators। हमको देखियार अछि सेठी पाखा पाखी predator रहिबेनी, like birds can eat the fishes which are growing in the pond। So जेमति पाखा पाखी predator न रहिबे। प्रोटेक्शन ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीसीज, आमे प्रॉपर्ली ताको प्रोटेक्ट करी रखिबा। तो एई सबु जिंस आमे वी हैव टू लुक आफ्टर the post stocking, after the stocking of the fishes। So after the post stocking we'll go for the harvesting, okay, after there is proper growth of the fishes, we'll harvest from the pond and we'll be releasing it into the market for the selling। Next is aquaculture in the pens and cages, okay, in pond ecosystem, in aquaculture in the pond, what we are doing, we are making a pond that is mainly a man made, आमे ताको निजे बनौचे pond को from the water side, and we are going for the aquaculture। But aquaculture in pens and cages means we are making like in the river system, in the river, in the lake, what we are doing, we are making a boundary in that area, and we are going for the aquaculture process। एठी हमें पॉन्ड बनौने, हमें कौन करछे, प्रॉपर्ली जो एनवायरनमेंट रे माछ माने बढुथिले सेही एनवायरनमेंट रे ही हमें ताको प्रॉपर गोटे चैम्बर बनेबा, बाउंड्री बनै के हमें ता भितरे माछ को ग्रो करिबा। सो aquaculture in pens, so aquaculture in pens implies rearing of required aquatic organism
like fish, prawns, mollusk in an enclosure which is formed by cording off areas of an open water body such as intertidal areas of sea or foreshore waters or lakes or reservoir by making an boundary by the net. ओके तो आमे तार नेचुरल एनवायरनमेंट रे माछर नेचुरल एनवायरनमेंट रे आमे पॉन्ड रे कोन करछे आमे सीडिंग करूचे निजे आमे पॉन्ड को निजे बनौचे सेठी सीडिंग निजे करछे बट aquaculture in pens रे कोन आमे आइदर सेटा लेक हो कि ओशियन हो कि कोई एरिया आमे सेठी निजे गोटे बाउंड्री बनेबा आ से बाउंड्री रे ही आमे सेठी aquaculture करिवा आमे जो टाइप रो फिश इंटरेस्ट आमे सेटाको सेठी aquaculture करिवा सी हियर सी द इमेज हियर 5.11 how they made a barrier a boundary here in the lake or in the river and they are doing the aquaculture there. Okay, so for pen aquaculture we have to select the site again like the pond culture ame first site selection kariba code site selection kariba which is suitable for the growth of these fishes. The site should be away from the areas of high winds and typhoons. Okay, jodi high winds besi nothibo high tides nothibo ame sei area ku choose kariba for the pen aquaculture. Then we'll select the site should be taking into account on the range of maximum water level. So maximum water level ଯେମିତି ବେଶୀ ନ ହବ ସେଠି ଆମେ ସେଇ ସାଇଡ କୁ ଚୁଜ କରିବା. The bottom mode of the water body should be firm enough so that allow the pen ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନେଟ୍ ବନଉଛେ ଆଉ ନେଟ୍ ବନେଇକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ହିଁ aquaculture କରୁଛେ ତ ଆମେ ଯୋଉ ନେଟ୍ କୁ ବାନ୍ଧିବା ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଉଁଶ ଦରକାର ବାମ୍ବୁ ଦରକାର ତ ସେଇ ବାମ୍ବୁ ଯେମିତି ଆମକୁ କ୍ଲେ ଭିତରେ ପଶି ପାରୁଥିବ ମାନେ ଯଦି ପଣ୍ଡ ହେଲା କି ସରି ପଣ୍ଡ କହୁଛି ଲେକ୍ ହେଲା କି ରିଭର ହେଲା ଯଦି ତାର ତଳେ ପ୍ରପରଲି କ୍ଲେ କି ସଏଲ ନଥିବ ଆମେ ସେ ବାମ୍ବୁକୁ ସେଠି ପୋତି ପାରିବାନି ତ we must also look into this factor ki that bottom of the sea or bottom of the lake contain proper amount of mud or soil so that we can make the framework ଆମେ ତାକୁ framework ଟା ଭଲସେ ସେଠି ବନେଇ ପାରିବା so water at the site should be good quality ଯେମିତି ସେଇ particular ଆମେ like lake ହଉ କି ocean ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ water ମାନେ ଇଏଟା ସେମ୍ ନଥାଏ ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚୁଜ କରିବା ଯୋଉଠି ତାର pH ଭଲସେ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇ ପାରୁଥିବ it must have adequate dissolved oxygen and this site should be also accessible to the laborers so we are engaging laborers for the aquaculture process ଆମେ ଏମିତି ଜାଗା ବି like choose କରିବା କି ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି easily ସେଠି କରିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ବହୁତ deep sea ରେ ଆମେ ଯାଇକି choose କରିବା site ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନେ access ବି କରିପାରୁନଥିବେ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରିପାରୁନଥିବେ so this is the these are the criteria for which are required for the site selection for the pen culture construction of pen so we'll first make the pen how we'll make the pen we'll make the rigid pen means we'll like use some net or bamboos throw that bamboos and nets will make this rigid pen see here this diagram 5.13a so this is a rigid bamboo screen pen for the fish culture see that bamboo is like bamboo टाको हमें कौन करबा क्ले रे पुरे की ताको आगो सपोर्ट बनेबा देन bamboo रे हमें चारिपटे नेट को बुले की हमें सेटा गोटे चैम्बर बनेबा जो चैम्बर रे ही हमरो एक्वाकल्चर प्रोसेस हबो तो हमें काहे के एटा बनौचे ताकि हमें जति के एरिया रे हमें हमरो नेट बनेले से हमें सेई जगह रे प्रॉपर ताको एनवायरनमेंट दे परिबा ओके प्रॉपर एनवायरनमेंट देले देयर विल बी मोर ग्रोथ ऑफ द फिशेस so there are two types of pens flexible pens and rigid pens so rigid pens are what so these rigid pens they are like they're static ସେମାନେ ଗୋଟେ position ରେ static ହେଇକି ରହେ but flexible pens they can move from one place ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବନେଇଥିବା ସେଇ ଜାଗାରେ static ହେଇକି ନଥାଏ when there is movement of water that pen also move that pen aquaculture system also move from one place to another so two types of pens are used for the aquaculture process next we'll go for stocking and harvesting stocking means so you have to now allow the fishes which you want to grow in that pens ଆମେ ଯୋଉ fish को एबे grow करिया पे चाहूचे ଆମେ सेबे एबे pens रे ताको allow करिबा either seeds ହେଲା seeds means either egg ହେଲା कि तांकर juvenile ହେଲା ଆମେ ताको एबे छाड़ीबा कोठी से जो pen ଆମେ बनेइचे
So after, so like the pond ecosystem, pond aquaculture ame jemti korthile, jemti pre stocking, stocking, post stocking, ame stocking kala pare then we have to maintain the water quality, we have to maintain the soil quality, we have to maintain everything there. So after the proper growth of the fish, we'll go for the harvesting process. So this is pen culture, pen aquaculture. So we'll also go for the fertilization and feeding. Similarly, ame say fertilizer apply kariba to wipe out the weeds and feeding of the fish. Ame fish ର feeding को भी आखि आगे रखिକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ feeding କରିବା. Next is cage culture. So these are different types of what conventional method used nowadays for the aquaculture process. Pond aquaculture, pen aquaculture, and caged aquaculture. So cage aquaculture is similarly like the pen aquaculture. It is like we'll making the making a structure like the cage भलिया ଆମେ structure बनेबा और ता भितर हमें will allow the fishes to grow. Similarly या पई हमें site selection करिबा cage culture पाई. So these are the criteria for the site selection. The site should be in water body having surface area more than 1000 hectare or a depth of minimum 10 meter. तो आमे एई जगह रे चूज करिया जोठी तार माने वाटर बॉडी रो सरफेस एरिया थिबो 1000 हेक्टर आ तार डेप्थ थिबो 10 मीटर. Adequate water movement, सेठी properly water movement हेई परथबो. Adequate water movement must be there which will desirable for facilitate mixing and aeration, so that there will be aeration and dissolved oxygen will be increasing. The site should be reasonably sheltered away from the areas of typhoons or cyclone. तो से जो एमिति एरिया चूज करिया जोठी cyclone बेसी आसनथिबो, site which are not polluted, एमिति site चूज करिया जोठी pollution हो नथिबो. Okay, then after the site selection we will go for the construction of the cage हमें construct कर. See this is a figure 5.14a. So it is a floating circular cage. Okay, तो एई एमती हमें सिस्टम कोटे बनेबा केज ता चारिपटे नेट देकी आ एई केज टा को हमें नेकी रखि देबा कोठी where we want to, where the site where हमें जो साइट रे हमें सिलेक्शन करथिले सेई साइट रे हमें रखिबा. Okay, now we'll go for the stocking. हमें एबे जो माछ चाहू छै हमें ग्रो करिया पई we'll stock there. Okay, stocking, harvesting. See here the figure 5.15. This is cage culture in reservoir. रिजर्वियर रे गोटे केज कल देखो सर्कुलर केज गोटे बना है ताको वाटर बॉडी भितर रखा है. सेई केज रे हमें कोन तार प्रॉपर एनवायरनमेंट मेंटेन करबा, जति कि पीएच दरकार वाटर रे जति कि डिसॉल्व ऑक्सीजन दरकार ताको मेंटेन करिके हमें एबिसिटी विल allow the fishes to grow there. Similarly, like other types of aquaculture, after the stocking we have to look into the post stocking management जोथरे हमें water quality with proper interval check करिबा, dissolve oxygen check करिबा, then we'll go for the harvesting. Okay, so these are different conventional method used for the aquaculture process. So there are three conventional method: cage aquaculture, pen aquaculture, and pond aquaculture. Next there are various integrated aquaculture. Integrated aquaculture means combined aquaculture, composite aquaculture. Composite aquaculture means आमे aquaculture सहित आउ किछि गोटे farming process को combine करिके आमे aquaculture process कोडी कोडी देखिबो सुनिथिबो at a time माने से माने ब्रॉयलर कल्चर करथिबे. ब्रॉयलर जो वेस्ट मटेरियल ता तळे पोखरी भलिया बनैथिबे, ब्रॉयलर वेस्ट मटेरियल आसी पोखरे पडिबो, that will be used by the fishes and they will grow. So सेटा कोन कहै छै composite culture or integrated aquaculture. So what is integrated aquaculture? Integrated aquaculture can be defined as simultaneous farming activities of two or more crops where at least one is of aqua crop. आमे सेठी गोटे aqua crop सहित अलगा किछि फार्मिंग प्रोसेस को जॉइन करिकी कंपोजिट करिकी आमे aquaculture process करिबा. तो जनरली कोन कोन सब इंटीग्रेटेड aquaculture process हुए आमे aquaculture आमे एमिति इंटीग्रेटेड aquaculture process माने चूज करिबा जेमति कि गोटे रो वेस्ट प्रोडक्ट आउ गोटे यूज करि परथबो. Okay, like how what are different types of this integrated aquaculture are done, like fish farming with agriculture. Okay, fish farming सहित हमें agriculture को जोड़ी की integrated aquaculture करिया जेमिति कि पैडी कम फिश कल्चर. आमे गोटे जगह एठी देखो फील्ड रे ए जगह रे हमें पैडी को ग्रो करि परिबा प्लस फिश को ग्रो करि परिबा. ओके, फिश रो जो वेस्ट प्रोडक्ट आसीबो
that will be reaching in ammonia, so that can be used by the paddy plants. Okay, fish farming with livestock, तो fish कम duck culture, आमे fish सहित duck को culture करिवा. See here, एटी fish culture भी होची, duck culture भी होची. So this is integrated aquaculture system. So we can also see third type, fish कम poultry culture. आमे fish सहित poultry culture माने कुकुड़ा कुकुड़ा को आमे culture करि परबा. See here, जोरा तुमको कहउतली एटी देखो structure. ओके, आमे एमिति स्ट्रक्चर बनैथिबा. ओके, जोटी कि हमर पोल्ट्री फार्मिंग करथिबा, पोल्ट्री फार्मिंग जस्ट तळे आमे पॉन्ड सिस्टम करथिबा. तो पोल्ट्री रो जो वेस्ट मटेरियल बाहरिबो, दैट विल बी फॉलिंग इन द पॉन्ड. से पॉन्ड रे बे फिश माने ताकू खाइ कि ग्रो करिवे. ओके, नेक्स्ट फिश कम पिग कल्चर. ओके, फिश आउ पिग एट अ टाइम आमे कल्चर करबा. तो कैटल कम फिश कल्चर. तो जते बेले आमे दुईटा टाइप ऑफ कल्चर एट अ टाइम करछे ताकू इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर को हाउची. या भितरे जोडा टेक्स्ट गुडा अछि निजे निजे पढिबो. आ जोडा बुझि न परियो मते पचारिबो. सब गुडा जदी मु लाइन बाय लाइन पढेबी टाइम होबनी. Okay, so these are different types of what integrated culture, aquaculture we can go for. बुझियला समस्तको. Next is non-conventional method for aquaculture. मैम हाँ मैम आपन को कांटेक्ट नंबर देथिबे कि परे डाउट होला आपन मेसेज करि हाँ परिबे. हाँ हाँ मु कांटेक्ट नंबर दे देबी एनी टाइम. किछि भी डाउट रहइबो कारण देख तुमको हमको 2 घंटा टाइम दिया होछ तुमको पढाया पई. ओके, तो ता भितरे लाइन बाय लाइन पढे कि बुझाटा पॉसिबल नो. तो मु यस केवल हेडिंग हेडिंग ये सब को भी माने कर तुमे माने पढिबो निजे जहां भी डाउट हो मते परे तुमे फोन करके पचारि परिबो क्लास परे. ओके, गोटे थैंक मिनिट यू मते मैम. पानी. Okay, next is non-conventional method of aquaculture. So this non-conventional method system refers to methods which deploy different approaches. तो conventional method रा कोन जोडा normal approach यूज करी कि जोडा डे टू डे लाइफ रे सब लोग करूचंदी सेटा होची conventional. And non-conventional method रा कोन which deploy different approaches. आमे अलगा अलगा approach यूज करी कि आमे aquaculture process करिया. जेमिति कि one is running a water aquaculture. ओके, तो आमे जो एबे जेति कि जे aquaculture पढिले conventional method सेठी कोन होची, we are not able to like change the water. ओके, आमे वाटर को चेंज कर पाने, वाटर सेठी कंटीन्यूअसली रहउची. हमकु प्रॉपर इंटरवल ले निजो को वाटर चेंज करिया को पडुची. पीएच देखिया जदी पीएच चेंज हो जाईची कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कमी जाईची, हमकु कोन करिया गुडा वाटर को चेंज. जदी वाटर धीरे धीरे पॉल्यूटेड हैला पर हमकु वाटर को चेंज करिया को निजे निजे पडुची. ओके, बट हियर इन रनिंग वाटर एक्वाकल्चर कंटिन्यूअसली आमे एमिति गोटे सिस्टम बनैथिबा जोटी कि कंटिन्यूअसली वाटर विल रन. वाटर सेठी कि जाउथबो आउ बाहर को बाहर जाउथबो. सेठी कोन हबो, वाटर पॉल्यूशन हेबाल रो चांस बहुत कम. तेणु प्रॉपर्ली वाटर पीएच मेंटेन हे परिबो, सेठी डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन हे परिबो, which will be good for the proper growth of the fishes, right? So one of the non conventional method of what aquaculture is your running water aquaculture. So running water aquaculture is a system where water flows continuously through the culture tank. आमे जो कल्चर टैंक बनैथिबा जोथरे आमे कल्चर करूथिबा फिश सेठी कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो करूथिबो इन आउ आउट. ओके, तो लाइक आमे जदी रिवर फ्लो होची सेमती वाटर भीतर को फ्लो करूथिबो आ बाहर को फ्लो हेक जाउथबो. सेटा होची रनिंग वाटर aquaculture. So what is the benefit of this running water aquaculture? So continuously the water quality will be maintained. So हमको एटी water quality एची maintain हे परिबो. जो pH जो हमको dissolve oxygen दरकार water रो माने fish रो proper growth पई. ओके, जनरली 7 to 8 pH
ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରପର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ନେସେସରି, ତ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବ ପ୍ଲସ୍ ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ପ୍ରପରଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ ୱାଟରରେ। ସୋ ଆମେ କେମିତି କରି ହାଉ ଟୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦିସ୍ ରନିଂ ୱାଟର ଆକ୍ୱାକଲଚର ସିଷ୍ଟମ, ଆମେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ବନେଇବା ସେଟା କେମିତି ବନେଇବା। ସୋ ଦିସ୍ ରନିଂ ୱାଟର ଆକ୍ୱାକଲଚର ସିଷ୍ଟମ or the cage it must have like slopes, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବନେଇଥିବା ତାର ସ୍ଲୋପ ଥିବା ଦରକାର, so that slope the water will enter and water will go out. So how will you design? See the slope between the inlet and outlet, see the points 6.3, the point number 1, the slope between the inlet and outlet point should be of 1 to 3%. ओके तो आमे इनलेट आ आउटलेट भितर स्लोप बनै, जदि स्लोप माने कोन ମାନେ ଗଡାଣିଆ ହେଇକି ଯଦି ବନେଇବା କଣ ୱାଟର ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୁଭ୍ କରିପାରିବ। ସୋ ଇନଲେଟ ଆଉ ଆଉଟଲେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋପ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଲୋପ ଟା କେତେ ହେବା ଦରକାର 1 to 3% ସ୍ଲୋପ। Ponds perimeter should usually be built straight, avoiding curves so that ensure uniform flow of water. तो आमे जो ए रनिंग वाटर सिस्टम रे अगेन आमे पॉन्ड भी बनै परिबा, ओके पेन्स भी बनै परिबा, केज भी बनै परिबा, किंतु एठी कोन होतिबो सेठी हमर कोन वाटर टा कांस्टेंट थिला कन्वेंशनल मेथड, एठी वाटर टा कंटीन्यूअसली फ्लो होतिबो। तो आमे पॉन्ड टा एमिति बनेबा दरकार, पॉन्ड रो पेरीमीटर, पेरीमीटर माने तारो जो बाउंड्री टा एमिति बनेबा दरकार कि सेटा स्ट्रेट थिबो, स्ट्रेट थिले कोन हो वाटर इजीली बाहर को जाई परिबो आउ भीतर को आसी परिबो। जदि सेठी कर्व रहिला, कर्व हे गला वाटर टा इनफ्लो आउटफ्लो तार हेई परिबोनी। आउ कोन रहबा दरकार क्राइटेरिया, each pond should have separate water control provision in order to cut off the ponds when it is required. Okay, so सब pond रो गोटे गोटे water control system थिबा दरकार, so that we can easily like easily inlet the water and outflow the water. There should be provision for suitable suction device for cleaning the running water. Okay, so the suction device, the easily suction device it use he parthvo so that to clean the pond. There should be the provision to adjust the rate of inflow and outflow. Okay, ame jo inflow outflow seti kariଥିବା सेटा केमिति करथिबा थ्रो ए मोटर सिस्टम करथिबा, तो आमे ताकू जेमति कंट्रोल करथिबा वाटर इनफ्लो केते रहइबो आउटफ्लो केते रहइबो कंट्रोल करि परथिबा जेमति सेमति सिस्टम बनैथिबा। ओके, so there must be install of water pumping system, आमे सेठी water pumping system भी रखिबा जोटा कि water current रो inflow outflow को कंट्रोल करिवो। water supply should be free from pollutants, आउ से water supply आमे जो water सेठी देबा that must be free from pollutants. So these are the criteria which are used to make the running water aquaculture system. Next is dimension. So what is the dimension must we see for this running water aquaculture? So dimension, the length is about 20 to 100 meter and breadth is about 2 to 10 meter. So dimension of this running water aquaculture, we can make like any type of system, like it can be circular, it can be rectangular, it can be square, but mostly that this rectangular shape of the aquaculture system are they are mostly used. And generally the what are the dimension of this system, that is length is about 20 to 100 meter and breadth is about 2 to 10 meter. Then we should look into the water supply. Okay, water supply hame kemti, there are two methods of water supply, conventional flow of water supply and your intensive flow through system. So conventional flow through system is, in this system the requirement of dissolved oxygen by the cultured species is made by inflowing supplied water. In general the supply of oxygen required by the fishes is dependent on the rate of flow of water. Okay, तो ये जो fish मानकर जो oxygen requirement टा कहाँ पर depend करिवो, on the depend of the flow, it will depend upon the flow of water. आमे flow of water टा को control करि परिबा केमिति, according to the requirement of the oxygen by the fishes. And in intensive flow through system, so in this system the oxygen requirement by the fish are made by oxygenation of the inflowing supplied water. In this system the rate of flow of water can be increased or decreased based on the stocking density. ओके, आमे एठी मैनेज करि परथबा आमे केते वाटर फ्लो टाको केते देबा, the speed of the water flow is maintained here in the intensive flow through system. So these are two types of water supply system in the running water aquaculture system. Okay, so these are different terms used.
specific flow rate, को flow रे आमे water सेठी apply करिवा, then mean water velocity, specific volume. Okay, so these are different terms used in the running water aquaculture. So specific flow rate is what? The rate of flow of water in the system. Okay, rate, को rate रे water flow होची ताको जाय specific flow. Okay, and mean water velocity, so water must have a specific velocity there, specific volume there. So these are the different terms related to the water current which is supplied in the running water aquaculture. Next, there is a word that is carrying capacity. There is a term that is carrying capacity. Carrying capacity तमे अलग subject भी पढ़िथिबो, कोठी पढ़िछो, growth रे पढ़िथिबो, logistic growth, exponential growth पढ़िछो. तो सेटे carrying capacity सुनिथिबो गोटे word. Carrying capacity माने कोन, गोटे एरिया रे मैक्सिमम केते ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हे परिबो, द मैक्सिमम लिमिट टा को जाय कैरिंग कैपेसिटी. सिमिलरली कैरिंग कैपेसिटी टर्म इज कैन आल्सो बी यूज्ड इन द फिश कल्चर. तो हमें जो पॉन्ड बनैछे कि केज बनैछे कि पेन सिस्टम बनैछे, सेही तार कैरिंग कैपेसिटी केते, माने मैक्सिमम सेठी केते नंबर ऑफ फिश ग्रो करि परिबो, सेटा को तार कैरिंग कैपेसिटी को जाय. सो the production capability of running water aquaculture pond is termed as its carrying capacity. तो केते production maximum गोटे, it is not only applied in the running water aquaculture, this is also, this carrying capacity is term can be used in the pond ecosystem. Conventional method रे भी हमें यूज कर परिबा और नॉन कन्वेंशनल मेथड रे भी यूज कर परिबा. सो कैरिंग कैपेसिटी हमें काहो कहबा, मैक्सिमम प्रोडक्शन गोटे aquaculture सिस्टम रे केते हेई पाउची, सेटा होची तारो कैरिंग कैपेसिटी. Okay, there are several other terms like loading capacity. Loading capacity kono, loading capacity is defined as the biomass of species in kilogram per unit of the water flow. Okay, तो केते बायोमास ऑफ ए फिश फॉर यूनिट ऑफ द वाटर फ्लो, माने हम एटी फिश रो बायोमास टोटल जति की फिश गोटे रनिंग वाटर सिस्टम रे ग्रो हेची, तार वेट करबा हमें, तो वेट बाय टोटल हमें केते वाटर इनफ्लो करथिले divided by total volume of the water. So that represent what? Your loading capacity. Next is rearing density. Rearing density is defined as the biomass of species in kilogram per unit of rearing volume. Okay, तो unit volume water रे केते kg रो biomass produce होला, that is the rearing density. Then turnover rate. So these are some terms related to the this running water aquaculture. It terms गुड़ा पढ़िबो, doubt हेले पचारिबो. Okay, so in this running water aquaculture, how will make the ponds, lay out the pond mane pond ro structure केमते बा दरकार. So that pond structure can be like rectangular, can be square, can be like circular. Okay, see, this is the layout of rectangular and hexagonal running water aquaculture system. এই ভলা layout बना है देखो. Okay, so that there is proper inflow of water and outflow of water. ए layout रे देखो गोटे पटे inflow होची water, गोटे पटे outflow होची, आ से माने केमिति बनाइतबो, slope हेकी बनाइतबो, so that गोटे पटे पसिबो आ गोटे पटे बाहरिबो. Okay, next is what are the advantage of this running water aquaculture. Advantage कौन रहउची, कौन advantage रहिबो, properly you can maintain the environment for the fish culture पई जहा जति की proper environment, optimum environment जहा दरकार, proper pH, proper dissolved oxygen ताको हमें maintain करि परिबा. Okay, किंतु running water aquaculture वाला कोन, say they are smaller in size. So being smaller in size, this running water ponds occupy much less space than the conventional method. आमे बहुत कम जगह रे एटा को बनै परिबा. Then the feeding and harvesting is relatively easier in the running water aquaculture. Easily आमे ताको feeding आउ harvesting करि परिबा. Owing to the clear water, the running water aquaculture is relatively easier to take notice the predator माने कम थांती. Okay, and this also maintains this non conventional aquaculture gives greater yield per unit area. एटी yield अधिक रहइबो, काहे कि yield अधिक रहइबो, properly सब environment आमे जदि maintain करिबा, then growth will be more, तेनु productivity बढ़िबो. So running water aquaculture रा productivity is more than the conventional method.
नॉन कन्वेंशनल मेथड रे जो एक्वाकल्चर होची तार प्रोडक्टिविटी कन्वेंशनल मेथड रु अधिक रहिबो काहे कि सेठी पानी पॉल्यूशन होची कन्वेंशनल मेथड रे जोटी कि एठी पॉल्यूशन हेबार चांस नाही तोडू फिश मान को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलला से माने प्रॉपर्ली ग्रो करिवे। Okay, next is coming to the there is another type of aquaculture, that is recirculation aquaculture. Recirculation aquaculture means आमे गोटे सिस्टम बनैले aquaculture पई, राइट? सेही सिस्टम जो सिस्टम रे पानी जेतले किछि दिन पानी रही गला, ओके, that water will become polluted. फिश माने जेतले ग्रो करिवे से पानी रे किछ दिन परे फिश रो वेस्ट प्रोडक्ट हला कि आउ किछि जिंस रे मिसी की वाटर धीरे धीरे पोल्यूट हबो। ओके, अगेन से पोल्यूटेड वाटर को हमें रिसाइकल करिवा, अगेन ताकू क्लीन करिवा, माने सेठी गोटे हम सिस्टम रखिथिबा जोटा कि वाटर को क्लीन करिवो, अगेन दैट वाटर इज allowed to inflow into that pond जो सिस्टम रे हमें कर। तो दिस इज नोन एज रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर, माने आमे कंटिन्यूअसली वाटर को रिसाइकल करूचे। सी द सिस्टम केमिति होचे, ए सिस्टम ता देखो फिगर 6.4। ओके, फिगर 6.4 रे देखो, so there is a biological filter, गोटे फिल्टर एठी अछि। ओके, इट इज द कल्चर पॉन्ड परे गोटे बायोलॉजिकल फिल्टर अछि। तो कल्चर पॉन्ड जेतले वाटर टा पोल्यूटेड हबो आमे कोन करबा, से वाटर को बे अलाउ करबा से फिल्टर थ्रू रे क्रॉस करिवो। तो फिल्टर थ्रू रे क्रॉस करले कोन हबो, जति सब अनवांटेड पोल्यूटेड सॉल्यूट्स माने कोन से फिल्टर रे रहि जिवे एंड रेस्ट ऑफ द वाटर इज फ्लोज आउट। एबे सेही वाटर को पुनी अगेन हमें कल्चर पॉन्ड रे अलाउ करबा। ओके, सो दिस इज नोन एज रिसर्कुलेशन aquaculture। आमे वाटर टाको कंटिन्यूअसली रिसाइकल करूचे, केमिति? बाय क्लीनिंग, कंटिन्यूअसली आमे ताको क्लीन करूचे, रिसाइकल करूचे, अगेन इट इज गोइंग टू द वाटर बॉडी। So this recirculating aquaculture system generally consists of three basic components। तार तीनटा basic component रहउची, one is culture unit। okay, so the recirculation aquaculture system contains three units। culture unit माने जो pond रे हमें माने फिश को ग्रो करेगा, कल्चर यूनिट। नेक्स्ट देयर इज अनदर यूनिट, दैट इज सेडिमेंटेशन यूनिट, थर्ड इज फिल्ट्रेशन यूनिट। ओके, सो सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन यूनिट इट इज फॉर द क्लीनिंग ऑफ द वाटर। ओके, वाटर क्लीन है कि अगेन पुणे हमें कल्चर यूनिट को छाडुचे। सो कल्चर यूनिट रे वाटर यूज हबो, किछि दिन वाटर यूज होला परे दैट वाटर विल बिकम पोल्यूटेड। हमें सेही वाटर को बाहर करबा, will allow in the sedimentation unit, then in the filtration unit। तो सेडिमेंटेशन यूनिट क्रॉस करिवो, पुनी फिल्ट्रेशन यूनिट क्रॉस करी अगेन पुनी बुली की से वाटर कोठी के आसीबो, कल्चर यूनिट को आसीबो। सो दिस वे वी कैन रिसाइकल द वाटर फॉर द यूज इन द एक्वाकल्चर। ओके, सो सेडिमेंटेशन रे कोन होची, सेडिमेंटेशन यूनिट रे सेडिमेंटेशन हम सुनिथिबा, दिस इज वन प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो हमें कौन करिया, बॉटम ऑफ द वाटर इट विल बी कंटेनिंग द सेडिमेंट्स, सो रॉक टाइप मटेरियल, स्टोन टाइप मटेरियल, so that the solute particle which are present in the water that will be settled down, सेटल है कि सेठी रही जीवो सेडिमेंट रे, and rest of the water is flows to the filtration unit। फिल्ट्रेशन यूनिट रे कोन फिल्टर लागिथिबो सेठी, से फिल्टर रे किछि किछि सेठी आइदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो कि किछि किछि पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल से फिल्टर थ्रू रे क्रॉस करिक जाई परिबेनी, से माने फिल्टर रे रही जिवे एंड रेस्ट वाटर विल बी मूविंग आउट व्हिच इज अगेन अलाउड टू एंटर इनटू द कल्चर पॉन्ड। See here, this figure 6.5, so this is a diagram that is showing the recirculating aquaculture system। See here, this is the culture unit, you can see the culture unit, it has a inlet। okay, water inlet अछि, इनलेट थ्रू रे पानी जाउची। एबे कल्चर यूनिट रे किछि टाइम वाटर यूज होला परे वाटर पोल्यूट हो जाउची, देन थ्रू द आउटलेट इट इज गोइंग टू वेयर, सेडिमेंटेशन यूनिट। there are three units, see, culture unit, sedimentation unit, filtration unit। so culture unit रो water outlet ही कोठी जाउची, sedimentation unit रे। तो sedimentation unit रे सी तळे देखो रही जाउची, जो सेडिमेंट है कि जति कि सॉल्यूट पार्टिकल थिला, अनवांटेड पार्टिकल, पोल्यूटेड पार्टिकल जोड़ा वाटर को पोल्यूशन करथला, तळे से माने सेडिमेंट है कि रही जाउची। देन वाटर थ्रू द आउटलेट इट इज गोइंग टू द फिल्ट्रेशन यूनिट। ओके, तो से ए सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन यूनिट रो काम कोन, वाटर को क्लीन करेबो। तो सेडिमेंटेशन रे किछि वाटर क्लीन हे गला, अगेन इट विल मूव टू द फिल्ट्रेशन यूनिट। फिल्ट्रेशन यूनिट रे फिल्टर लागिथिबो, फिल्टर थ्रू रे वाटर क्रॉस करिके
again it through the inlet it is again going to the culture unit ମାନେ ସେଇ same water ଏଠି ଆମକୁ ତାହେଲେ ରିସର୍କୁଲେସନ ଆକ୍ୱାକଲଚର ସିଷ୍ଟମ ରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ୱାଟର ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ସେମ୍ ୱାଟର କୁ ରିସର୍କୁଲେଟ କରୁଛେ by using two other units sedimentation unit and filtration unit which is used for the cleaning of the water ओके तो जनरली जेतले फिश ग्रो होउची धीरे धीरे सेठी कोन आइदर सॉल्यूट पार्टिकल बेसी डिपोजिट होउची नले बेसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होउची जोटा कि वाटर को पॉल्यूट करछि तो हमें फिल्टर रे देखो फिल्टर रे सब बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन यूनिट अछि फिजिकल फिल्ट्रेशन यूनिट अछि फिजिकल फिल्ट्रेशन यूनिट रो काम कोन जति कि सॉल्यूट पार्टिकल थिबो ताकू से रोकी दबो रेस्ट को छाड़ी दबो पुनी बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन यूनिट रो काम कोन जति कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब थिबो से फिल्टर रे लागि रहि जिवो रेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज फ्लोज आउट तो जति के वाटर क्लीन हे के आसला से अगेन पुनी इनलेट थ्रो रे कोठी की जाउची पुनी से कल्चर यूनिट की जाउची सो दिस इज द recirculation aquaculture system. So what are different fish which are which madam UV ozone layer jo UV ozone layer okay UV ozone layer is what UV light जानते तो मैंने ultraviolet light ultraviolet light जेतले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर पड़े कोन हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरि जानते कि नहीं तमर जे सुनिथिबो जो फिल्टर घरे होची वाटर फिल्टर केबे किनिया को जाइछो सेठी डिफरेंट टाइप रो तम वाटर फिल्टर जोडा घरे लागिथिबो देखिबो फिल्टर ऑन कला पर गोटे लाइट जळे देखिछो वाटर फिल्टर ऑन कला पर भीतर गोटे लाइट जळे देखिछो कि नहीं yes तो से लाइट टा कोन से लाइट टा होची यूवी लाइट UV rays ओके से यूवी लाइट रो काम कोन जति कि भी पानी रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थिबो ताको से मारि दबो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी किल्ड बाय द यूवी रेडिएशन तमे पढिथिबो सब जो आमे जेतेबेले कल्चर करछे माइक्रो आमे माने लैबोरेटरी जेतेबेले कल्चर करछे सेल त आमे बिफोर ताको कोन यूवी रेडिएशन दो जो हुड यूज करछो हुड जानथिबो हुड जानछो जानला ठीक अछि तो ए यूवी लाइट रो काम कोन जनरली यूवी लाइट आ ओजोन O2 या O3 यार काम कोन ए माने सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारी दियंती तार डीएनए को अफेक्ट करंती आ तार डीएनए अफेक्ट ले माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने मर जांती तो ए फिल्टर जते फास्ट वाटर टा फिजिकल फिल्टर को जाउती सो सॉल्यूट माने रहि गेले देन बायोलॉजिकल फिल्टर को जाउची माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने रहि गेले सेठी हेले भी जदी किछि भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिल्टर दे की क्रॉस एमिति तो सब जिंस 100% हुए नी माइट भी किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन से वाटर थ्रो रे पुनी माइट भी जाउथिबो तो से रेस्ट पुनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को केमिति मारिबा हमें बाय यूजिंग यूवी लाइट ओजोन लेयर ए ओजोन के ए सब यूज करके हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारी परिबा बुझेला okay so these are different table number 6.1 these are different fish which were cultured by using this recirculating aquaculture system okay like eel tilapia salmon trout तो यही सब fish गुड़ा generally recirculating water system रे grow करा होची okay so what are the different advantages of this recirculating aquaculture system so it is reduce operational cost okay operational cost reduce करिवो okay आमे जस्ट मशीन ही लगे देले फिल्ट्रेशन मशीन सेडिमेंटेशन मशीन तो एठी लोक बेसी आ दरकार नहीं ताकू तार एनवायरनमेंट को मैनेज करिया पई ओके सो इट रिड्यूसेस द ऑपरेशनल कॉस्ट ओके cost of predator and parasite control आमे predator को बेठी रोकी परिबा risk of elimination of potential parasites more efficient feed management आमे efficiently सेठी feeding करि परिबा flexibility of the farm location आमे ताको flexible करि परिबा okay it is flexible more flexible than the other methods of aquaculture it ensure it reduces the stress of the water and land crisis okay water stress को decrease करिवो water stress माने water stress केते हबो जतले water pollution हबो बेसी तो एटी pollution ही होउनी हमें polluted जिंस को बाहर कर देउचे तेनु water stress also reduced here so this is the advantage of the recirculating aquaculture system next another type of aquaculture is greenhouse aquaculture like I mean greenhouse तुम पढ़िछो greenhouse effect okay similarly greenhouse aquaculture भी हमें करि परिबा केमिति गोटे greenhouse type रो हमें बनेइबा and inside that greenhouse we'll make a pond system or cage system that will
that will be used for the aquaculture process. So greenhouse ର benefit କଣ ରହିବ? Greenhouse will it will be away from the predators. It will be ମାନେ predator ସେଠି ପଶି ପାରିବେନି କି ସେଠି ଆମେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ର କାମ କଣ ସେଟା ଏମିତି ବନା ହେଇଥିବ it will absorb light from the sun. ଓକେ ଲାଇଟ୍ ଆବଜର୍ବ କରିପାରିବ ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ପଣ୍ଡ ସି ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ see a diagram number the first diagram okay aquaculture in greenhouse see how they made the aquaculture see here this they make the water current here in the center and around it is having the greenhouse okay that is made up of various types of material that absorbs more light into the greenhouse. okay so ପଢିବ ୟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମତେ ପଚାରିବ. next coming to the biofloc farming biofloc farming କଣ so along with some fishes ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛେ along with some fishes will allow some microorganisms ଆମେ କିଛି microorganisms କୁ ଏଠୁ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଛାଡିବା along with the fish କୋଉ microorganism pathogens ନୁହଁ ଯୋଉମାନେ fish କୁ disease cause କରିବେ ସେଇ microorganism ନୁହଁ these are the useful microorganism okay so biofloc refers to heterotrophic aggregates of particulate organic matter and microorganisms associated with the extracellular polymeric substances suspended in ponds or tanks okay तो आम ये कौन कर फिश सहित किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम ग्रो करवा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने कौन एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस बनाती जोटा कि इज ए फूड सोर्स फॉर द फिश सेटा फिश माने तांकर फूड भलिया से माने यूज कर परिबे कोन एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो किछि किछि बैक्टीरिया अछंती से माने कोन करंती एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट से माने निजे सिक्रेट करंती तो से एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस फिश माने एबे यूज करि परिबे तांकर खाद्य पई ओके तो आमे फिश along with some micro organism आमे एठी ग्रो करछे तो सेही ताकू सिस्टम टा कुआ जाय बायोफ्लॉक फार्मिंग okay so this biofloc farming this biofloc farming just it refers to the heterotrophic aggregates of particulate organic matter and microorganisms associated with the extracellular polymeric substances suspended in the ponds or tanks so this new farming techniques is based on in situ production and use of microorganisms एठी हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म मानको यूज करछे लाइक बैक्टीरिया algae fungus invertebrates and some other bacteria for the purpose of nutrition कौन पे हमें यूज करछे it is these are nutrition for the fish nutrition improving water quality treatment of waste and prevention of disease तो हमें किछि जदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेठी ग्रो करबा मे बी दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल किल द अदर पैथोजेंस व्हिच आर इन्फेक्टिंग द fish so this biofloc system is also known as heterotrophic pond or active suspension pond or green soup ponds so biofloc system को otherwise हमें heterotrophic ponds भी कहि परिबा okay so how will design a biofloc system so first design consideration kon rahibo first will go for the shape and size okay so production system biofloc technology should be designed in such a way that will maximize the viability of microbial flux system as well as the fish okay तो आमे एमिति ताकू डिजाइन करबा कि से मैक्सिमम वायबिलिटी ऑफ काहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेठी वायबल करि परथिबे आउ फिश भी करि परथिबे एठी हमकु दीटा सिस्टम देखिया को पड़िबो एठी हमकु माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दरकार फिश भी दरकार तो दुई जन को पाई कि जंती प्रॉपर एनवायरनमेंट होतबो आमे सेही भलिया बायोफ्लॉक सिस्टम को आमे डिजाइन करबा first is shape and size so shape of the pond or tank of biofloc system is based on the round pond concept तो आमे कोनोसी शेप साइज ही बने पारे रेक्टेंगुलर हे पारे राउंड भी हे पारे okay so size is generally biofloc system is used 100 to 1000 square meter okay so generally biofloc system गुडा बेसी बड़ न थाए तार साइज जनरली 100 to 1000 square meter साइज थाए
pond depth. So pond depth is generally used, that is 1 to 2 meter. So bioflux system ପାଇଁ जो pond use हुए तार depth usually 1 to 2 meter थाए. Pond lining, so this pond lining, bioflux pond can be lined with bricks, concrete. तो आमे ताको brick रे line करि परिबा, concrete रे करि परिबा, PVC polyvinyl chloride रे करि परिबा. Okay, see, so this is a design of circular bioflux मैडम system. लाइनिंग जोटा पॉन्ड लाइनिंग से लाइनिंग टा कोन लाइनिंग माने आमे जो पॉन्ड को बनौचे, जो सिस्टम टा बनौचे, लाइनिंग देले सिना से वाटर को होल्ड करी रखिबो. वाटर को केमते होल्ड करिवो नले? जो चारि पड़ जो वॉल तो तार हां, चारि पटे जो वॉल टा लाइनिंग. ओके ओके, सी हियर, मैडम ए डायग्राम टा देखो, एटा गोटे बायोफ्लक्स सिस्टम बना हैछि. ओके, सो लाइनिंग कोडा ता चारि पटे जो बाउंड्री टा दिया हैछि सेटा होछि लाइनिंग. ओके, जोडा कि वाटर को होल्ड करी रखिबो. नले वाटर केमते होल्ड हेकि रहइबो इनसाइड द सिस्टम? देखो तार गोटे इनलेट थिबो, तार गोटे आउटलेट थिबो. इनलेट थ्रू रे वाटर एंटर करबा, आउटलेट थ्रू रे वाटर बाहर को जीवो. ओके, तो ये जो लाइनिंग ता तार कोथरे बना हैतिबो, इट माइट आइदर ब्रिक्स रे हमें बनै परिबा अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी. हम पाखरे कोन अवेलेबल अछि, इटा रे हमें बनै परिबा, कंक्रीट रे बनै परिबा, सीमेंट कंक्रीट देई की, कि हमें किछि अदर मटेरियल पॉलीविनाइल क्लोराइड किछि जो प्लास्टिक मटेरियल सेथरे बनै परिबा. ओके, जे कि वाटर करंट को रेजिस्ट करि पारथुबो. जेमति कि हमें जो यूज करचे टैंक, टांकी हमें जो छात रे टांकी रखुचे, के सीमेंट रे टांकी बनै थांते, के जो प्लास्टिक टांकी जोटा कि सेटा कोथरे तयारी, पॉलीविनाइल क्लोराइड रे तयारी. ओके, तो हमें एमिति बनेबा जेमति से वाटर को रेजिस्टेंट करि पाथो, वाटर फ्लो को रेजिस्ट करि पाथो. Okay, that must have a central drainage system so that the water will be drained out. So central drain, also known as shrimp toilet or shrimp pits, are installed at the center of the pond for the removal of sloughs. Okay, हमको जति की माने at time interval जति की waste material हम remove करया पई हमें गोटे center गोटे central drainage system बनैथिबा कोथरे in the bioflux system. Okay, so these are the some criteria used for the manufacturing of this bioflux system. Next, coming to the inoculation of tank. Okay, so after we are making the bioflux system, first we have to inoculate here two things. Kon it inoculate kariba? First we will inoculate the microorganism, then we will go for the stocking. Stocking माने हम एठी फिश रो आइदर अंडा और तार जुवेनाइल छाड़ीबा, आउ एठी इनोकुलेट कोन करिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी छाड़ीबार अछि ना एठी बायोफ्लक्स सिस्टम रे. सो हम एठी इनोकुलम बनेबा फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो, माने गोटे पर्टिकुलर अमाउंट रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम सेठी छाड़ीबा. सो बायोफ्लक्स टेक्नोलॉजी for fish or shrimp farming is dependent on the maintaining high microbial flock. हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एठी छाड़ीबा केमती in the suspension. The initial formation and stable microbial community requires injection inoculation. Inoculation माने छाड़ीबा, हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को से टैंक रे छाड़ीबा को जाय inoculation. Okay, so first preparation of inoculum, आमे इनोकुलम प्रिपेयर करिया माने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें चाहूचे बायोफ्लक्स सिस्टम रे पुरिया पई हमें तार गोटे इनोकुलम बनेबा. दैट इनोकुलम which is generally used that 1500 माने 1500 लीटर पई हमें गोटे पर्टिकुलर अमाउंट रो इनोकुलम यूज करिया. 1500 लीटर जदी फ्रेश वाटर अछि हमें सेठी 150 लीटर रो इनोकुलम हमें सेठी देबा को पड़िबो. मैडम इनोकुलम एटा ओडिया रे से जिंसटा तमे कोन सेटा इनोकुलम एक्जाक्टली ओडिया रे तो मु कहि परिबिनी. जतले तुमे सेल कल्चर करूचो माइक्रो ऑर्गेनिज्म केबे तमे अच्छा बीएससी तो तुमे पढि एबे तो एमएससी डिस्टेंस रे करछो ना इग्नो रे? हां मैडम बीएससी बीएससी तो पढिथिबो ना रेगुलर? आज्ञा आज्ञा प्रैक्टिकल रे करछो केबे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करछो, बैक्टीरिया ग्रो करछो न्यूट्रिएंट मीडिया रे? हां मैडम कर करछो तो न्यूट्रिएंट मीडिया केते टाइप रो थाए? गोटे सॉलिड मीडिया थाए, गोटे लिक्विड मीडिया थाए. ओके, तो लिक्विड मीडिया में जनरली ट्यूब रे करू, ग्लास रो ट्यूब रे, आ सॉलिड मीडिया प्लेट रे हुए. तो आमे बैक्टीरिया को ग्रो करिया पई आमे किछि बैक्टीरिया को नै कि सेठी पकेइले तो बैक्टीरिया पुनी सेठी ग्रो हबो. नले आमे जदी एमती छाडी देबा माने हमर प्लेट टा को एमती बाहर ही छाडी देबा तो बाहर जेति कि भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अछि सब ग्रो करिवे सेथिरे. किंतु आमे गोटे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जदी चाहूचे ग्रो करिया पई सेटा को तो हमको सेही न्यूट्रिएंट मीडिया रे देबा को पड़िबो. तो जोति की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें न्यूट्रिएंट मीडिया रे छाडुचे ताकू कहा जाय इनोकुलम. तो एठी भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म छाडीबार अछि.
So it is like similar to a plate. ए जो बायोफ्लक्स सिस्टम सेटा हमें प्लेट रे छाडुथिले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एठा हमें कोन बायोफ्लक्स सिस्टम रे छाडिबा माने पॉन्ड सिस्टम रे छाडिबा। तो एठी भी गोटे इनोकुलम रहइबो माने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहइबो जोटा हमें से पानी रे छाडिबा, ताऊ कहै छै इनोकुलम। बुझियला? Yes, madam. Yes, madam. So this inoculum must be it is inoculated into the bioflux system. Okay, then we'll allow the I'll go for the stocking. We'll now allow the fish, I mean either egg ho, fish ର अंडा कि fish ର juvenile छोट छोट तांगर जो larval stage आमे ताकू सेठी छाडी परिबा। Next we have to maintain the water quality. Water quality, desired water quality maintain करिया को पड़िबो सेठी। First temperature देखिबा, temperature water ର maintain करिबा, water ର pH maintain करिबा। ओके, dissolve oxygen maintain करिबा, तार nitrate concentration देखिया को पड़िबो। So everything must be measured. आमे जदि किछि भी amount nitrate हला कि ammonia ର concentration टिके एपट सेपट हले, that will like affect the growth of fishes. So we have to manage everything. Water ର temperature टू आरंभ करी pH रो आरंभ करी कोन कोन सेठी dissolve अछि, को को solute dissolve अछि, ताकू सब हमें मापी की आमे ताकू properly ताकू manage करबा, so that there will be proper growth of the fishes. हेलो मैडम, हाँ जो RAS लेखा है फास्ट पॉइंट रे जो लेखा हैतला गोटे हाँ फ्रेश वाटर रे पॉन्ड वाटर 130 ml मिसेबा और RAS टा कोन गोटे लेखा हैतला। आरएस कोन तुमे निज को हमें पढै छी तो तुमको आरएस पढै छी टिके पूर्वरु को फुल फॉर्म को मु 6:40 रे जॉइन करल तो मैडम सेति जानि पारली। तमे हेते लेटर काई जॉइन करछो? रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, आरएस रो अच्छा फुल फॉर्म होची रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, जोटा कि हमें पूर्वरु पढि चलसु। अच्छा ओके हाँ ठीक। ओके, तो आमे से जो बायोफ्लक्स सिस्टम रे कोन कोन सब यूज कर परिबा? Different types of bacteria use कर परिबा। See, these are the different types of bacteria species like Vibrio species. Okay, Vibrio species, Aeromonas species, Pseudomonas species, एगुडा कोन सब बैक्टीरिया, Bacillus species, Clostridium, Enterobacteria species। तो एगुडा सब different bacteria आमे यूज कर परिबा बायोफ्लक्स सिस्टम रे। ओके, आउ कोन यूज कर परिबा? Different type of fungus ए भीतर सब पढिबो। ओके, केते केते बैक्टीरिया यूज हुए, तो एगुडा सब बैक्टीरिया स्पीसीज आमे बायोफ्लक्स सिस्टम रे यूज कर परिबा। डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल स्पीसीज आमे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडिडा, देन रोडोटुरुलास, क्रिप्टोकोकस, तो एगुडा सब आमे डिफरेंट टाइप रो फंगल स्पीसीज भी यूज कर परिबा इन द बायोफ्लक्स सिस्टम। ओके, तो आमे बायोफ्लक्स सिस्टम रे कोन एनी टाइप ऑफ आमे बैक्टीरिया भी यूज कर परिबा, एल्गी यूज कर परिबा, फंगस यूज कर परिबा, छोटो छोटो जू प्लांक्टन्स सेडा भी यूज करि परिबा। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमको कोन दरकार से हिसाब रे हमें यूज करबा। सेमती हमको डिफरेंट टाइप्स रो माइक्रो एल्गी भी हमें यूज करि परिबा इन द बायोफ्लक्स सिस्टम। जू प्लांक्टन्स यूज करि परिबा। ओके, ए माइक्रो एल्गी जू प्लांक्टन ता भीतर जाई कि पढिबो, जा बुझ न पारिबो पचारिबो हला। डिफरेंट नेमाटोड्स भी हमें यूज करबा इन द बायोफ्लक्स सिस्टम। Okay, so this is this is all about the bioflux aquaculture system. Next, coming to the wastewater aquaculture, एटा पढ़िबो cultivable species, management of carbon nitrogen ratio. Okay, next coming to the wastewater aquaculture. Wastewater aquaculture कोन? आमे waste water के यूज करिबा for the purpose of aquaculture। केमिति करिबा? आमे वेस्ट वाटर को फर्स्ट ट्रीट, आमे फर्स्ट क्लास रे गोटे पढितले मने अछि सुएज वाटर। सुएज वाटर को आमे अगेन यूज करि परिबा फॉर द पर्पस ऑफ एक्वाकल्चर। केमिति? सुएज जो वाटर आसुची ताको आमे फर्स्ट प्यूरिफाई करिबा, प्यूरिफाई करी की आमे ताको यूज करि परिबा फॉर द एक्वाकल्चर प्रोसेस। केमिति प्यूरिफाई करिबा? वाटर को प्यूरिफाई करिया पई देयर आर वेरियस प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस रे कोन कोन यूज होउची? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एगुडा होची फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस रे आमे डिफरेंट केमिकल ऐड करिबा लाइक डिसइंफेक्टेंट, like your disinfectant सब जो like your
what is that? Chlorine containing material. Chlorine containing material that can be also used to clean the water. That is chemical method. Biological method कौन? Microorganism को हमें use करी परिबा to clean the water. Okay, microorganism को हमें बाहर करिबा. So biological method, chemical method और physical method use करी के हमें water को first clean करिबा, waste water को, then that water is use for the process of aquaculture. तो waste water को हमें एठी recycle करी परिबा aquaculture process रे. ओके, तो वेस्ट वाटर जनरली आमे ताकू ड्रिंकिंग पर्पस रे यूज करि परिबारी. वेस्ट वाटर को आमे केमिति ताकू यूज करि परिबा? aquaculture process रे यूज करि परिबा. को वाटर सब यूज हे परबो? म्युनिसिपल स्वेज यूज हे परबो. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, इंडस्ट्री रो जो वेस्ट वाटर आछि सेडा भी आमे ताकू यूज करि परिबा फॉर द aquaculture process. डिस्चार्ज फ्रॉम द माइंस, रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड जो रन ऑफ वाटर आछि ताकू भी यूज करि परिबा. थर्मल वेस्ट वाटर, थर्मल पावर प्लांट रो जो वाटर वेस्ट होची से वाटर को भी हमें यूज करि परिबा aquaculture process पई. ओके, केमिति हमें फर्स्ट ताकू ट्रीटमेंट करिबा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस रे, देन विल यूज फॉर द aquaculture process. यूज ऑफ स्वेज वाटर आ भितर जोटा अछि पडिबो सेही सेम जिंस अछि. हमें स्वेज वाटर को फर्स्ट तीनटा मेथड रे ताकू हमें क्लीन करिबा. सी देखो एट सब अछि जो फिजिकल प्रोसेस रे कोन सब सेडिमेंटेशन, डाइल्यूशन, स्टोरेज, देन we'll go for the chemical process, then biological process to clean the water. Physical method, chemical, this is use of water discharge from the farms of aquaculture. Okay, physical method first use करिबा, chemical method, then biological method. तो water को first treat करिबा, then we'll use that water for the देखो biological method. This is another method of purifying the water. So these are what different like wastewater used for the aquaculture process. This is use of thermal water. So thermal wastewater थिले आमे ताकू कोन फास्ट ट्रीटमेंट करिबा, देन आमे ताकू aquaculture यूज करिबा. thermal wastewater माने कोन? सेठी किछि न्यूक्लियर मटेरियल भी थिबो, तो ताकू आमे फर्स्ट भी रिमूव करिया को पड़िबो. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द वेस्ट वाटर को सोर्स रो आसी ता ऊपर डिपेंड करे आमे ताकू को टाइप रो फर्स्ट ट्रीटमेंट करिबा, देन ताकू यूज करि परिबा. Okay, so these are different wastewater used for the aquaculture process. कितने टाइम हेलानी? 7:30. Next, coming to the fish seed technology and transport of fish. Okay, so fish seed technology. Fish seed technology माने कोन? What is fish seed technology? माने हमें सीडिंग केमती करबा, स्टॉकिंग केमती करबा, fish seeding technology, or how will transport after the harvesting of the fish, how will transport the fish. So fish seed is considered to be the most important component of fish producing industry. So we'll directly come to the point. So there are different types of selection, how to select the seeds for the aquaculture process. So fish seed can be obtained from the natural resource such as river, pond, reservoir, lakes and swamps where natural spawning of the fish has occurred. Okay, तो हमको aquaculture ପାଇଁ जो seed दरकार, seed means जो eggs ହେଲା कि जो juvenile ହେଲା, okay, तो सेटा हमें कोठु आनिबा, where will collect that seed. So naturally you can collect the seed. Naturally means its natural condition. जोटी माछ माने अंडा देइथिबे naturally आमे सेठी जाई कि ताकू कलेक्ट करिके आनि परिबा. So it can natural selection कोन? It is the selection of seeds where we'll select from such as from the river, बंध जोटा कि बंध कुआ जाए, बंध माने बंध, reservoirs, lakes, swamps. तो सही एरिया जो नेचुरली से माने स्पॉन कर, स्पॉनिंग माने अंडा देबा, जोटी नेचुरली से माने अंडा देई थांदी सही जगह रु आमे जाई कि सीड कलेक्ट करि परिबा. तो सेटा कोन कुआ जाए? नेचुरल कलेक्शन of the seeds. तो हमें केमिति बाछिबा को साइट रे हेइथिबो नेचुरल माने सीड से माने स्पॉनिंग करथिबे. सो साइट ऑफ सिलेक्शन, फर्स्ट विल सिलेक्ट द साइट and method of collection. So generally these seeds are found in the shadow zone. Shadow zone is what? So there are two zones
in the water body, generally in the mm, river, the fast eroding banks ମାନେ ଯୋଉ ପଟୁ ପାଣି କମି କମି ଆସେ, eroding banks also known as erosion zone, সেটা হচ্ছে ইরোজন, সেই সাইড রে জেনারেলি সিড কলেকশন আভয়েড କରାଯାଏ। সেটি জেনারেলি বেশি স্পনিং କରନ୍ତିନି ମାଛ ମାନେ। କୋଉଠି କରନ୍ତି? ଅପୋଜିଟ ଅଫ ଇରୋଜନ ଜୋନ୍। So the bank exactly opposite to the erosion zone is usually gently sloping, which is also known as shadow zone। the shadow zone, erosion zone ର just opposite ରେ shadow zone କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ସେ shadow zone ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ସ୍ଲୋପ ଏରିଆ ହେଇକି ଥିବ, ସେଇ ଏରିଆରେ ଜେନେରାଲି ମାନେ ଫିସ୍ ମାନେ ସ୍ପନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ନେଚୁରାଲି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସିଡ୍ ସେଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। Okay, so these are some characteristics of different types of seeds, like seeds of rohu, seeds of katla, seeds of prickle, seeds মানে কোন অন্ডা। Okay, so seeds of rohu, this is non floating। ଆମେ ତାର characteristics କେମିତି ଦେଖିବା? x ର characteristics, rohu ର କଣ? Indian major carps को କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତିନିଟା ମାଛକୁ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କାହାକୁ? ରୋହି, ଭାକୁର ଆଉ ମିରିକାଳି, ତିନିଟା ମାଛ ଶୁଣିଛ? ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶ ରେ ହଉଛି Yes, ରୋହୁ, madam. କାଟଲା ଆଣ୍ଡ ମୃଗଲ। ଏଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଜର କାର୍ପସ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ସେଇ ତିନିଟା ମେଜର କାର୍ପସ ର ଯୋଉ ସିଡ୍ କୁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଗ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଇଟ୍ସ ନନ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ, ନନ୍ ଆଧେସିଭ। କାହାର? ରୋହୁର। 5 mm in diameter, round shape, and that is reddish yolk, it has red, ତା yolk ଟା ମାନେ କେଶର ଟା ତାର red color, ମାନେ ଆମକୁ ତାର ଅଣ୍ଡା ଗୁରା red red ଦେଖାଯାଏ। କାଟଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କାଟଲାର egg, that is non floating, non adhesive, ଫ୍ଲୋଟ କରିବନି ଆଉ ନନ୍ ଆଧେସିଭ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚିପକି ହେଇକି ରହିବନି, ମାନେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସେପାରେଟ, ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେପାରେଟ ହେଇକି ସେମାନେ ଫ୍ଲୋଟ କରିବେ। ତାର ଡାଇମିଟର ହଉଛି 5 to 6 mm in diameter, this is round shape and light red in ତାର yolk ର color ହଉଛି light red। similarly ମିରିକାଳି ଯୋଉଟା, this is non floating non adhesive, 5.5 mm in diameter, round shape, yolk is golden in color। so these are different characteristics of eggs, hatchlings ମାନେ just egg ରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ hatchlings। ଓକେ, ତାଙ୍କ hatchlings ର କଣ ଡିଫରେନ୍ସ? ଓକେ, ତ ଏଇ ସବୁ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡିଫରେନ୍ସ ଏଠି ଦେଖେଇଛି ତିନିଟା ମେଜର କାର୍ପ ଭିତରେ, ପଢିବ ଏଟା। Okay, next is coming to the band breeding। band breeding means will the seeds were collected from the band। so band are specialized impoundments created during the monsoon month by creating embankment against a large catchment area। ବନ୍ଧ ବନାନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖିଥିବ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ବନ୍ଧ। Okay, so this band, after heavy rain, band receives large quantities of rainwater। heavy rain ପରେ band is, it receives a large quantity of rainwater that becomes a spawning ground for the fish। ଓକେ, ଯୋଉ ବନ୍ଧ ବନେଇଥାନ୍ତି, ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ରେନି ୱାଟର ସେଠି ଆସିକି ଡିପୋଜିଟ ହେଇଯାଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଫର ଦ ଫିଶ ଫର ଦ ସ୍ପନିଂ ଟୁ ଲେ ଦ ଏଗ୍ସ। ତ ଆମେ ସେଇ ବନ୍ଧକୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବା ରେନି ସିଜନରେ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ସିଡ୍ସ, ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ eggs from that band। so that କୁହାଯାଏ band breeding। see here, this is the schematic diagram which shows when the water inflows into the band, this band is that it is a reservoir of water is deposited in the band, and generally the fish they used to spawn there, and we can collect the seeds from that band। so this is known as band breeding। so this is the diagram, see it is a diagram of hatching band in Bankura district of West Bengal। how they made the band, ବନ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଦେଖ, ଏଟା ସେମାନେ କେମିତି ବନ୍ଧ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ପାଣିରେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବେ, ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ବି ସିଡ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବା। ଓକେ, there are two types of bond, dry bond and wet bond, ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ପଢିଦବ ତୁମମାନେ। okay, so spawning in bond, so these bond they are like they are the fish they prefer to spawn in this bond। so breeding in the bond can be natural or induced depending on the prevailing environment condition। okay, ତ ଆମେ ସେ bond ରେ breeding either naturally କରିପାରିବା, or we can also like bring the seeds from some other area, and we can allow these seeds to
like develop there. तो आमे सेठी कल्चर भी करि परिबा आ सीड कलेक्शन भी से बंद रु आमे करि परिबा. Okay, so this is the band breeding. Next, coming to the induced breeding. Induced breeding is what? The breeding is induced in the feces. Okay, so induced breeding is the breeding technique where external hormones आमे किछि natural external factors देकी आमे सेठी breeding करूजे. Okay, माने this is a man made breeding. एबे जतिकि थिला कोन that is natural breeding and naturally आमे allow करछे fish मानको to grow तांका अंडा आनी कि छाडी दोजे से माने निजे निजे breed करछने naturally. Induced breeding कोन? Induced breeding होची आमे किछि hormones की external factor inject करिके fish मानको तांकर breeding करिवा. केते बेले करिवा? Generally आमे जदि देखिबा गोटे fish रो male और female. Okay, male will provide the sperm, female will provide the egg. जदि तांकर मेल आउ फीमेल जते बेले से माने गैमेट प्रोड्यूस करूचंदी गैमेट प्रोड्यूसिंग टाइम जदि सिमिलर न हबो सेम टाइम रे न हबो ताल चांस ऑफ फ्यूजन बिटवीन द स्पर्म एंड एग इज रिड्यूस तांको भीतर फ्यूजन सेटिक हेई परिबनी सो देयर नीड टू बी द स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम रे प्रोड्यूस हेले ही गोटे स्पर्म आउ एग भीतर फ्यूजन हबो फर्टिलाइजेशन हबो आउ सेठू प्रोडक्शन हबो न्यू फिश कि जदि सेम टाइम रे न होला जदि मेल अलगा टाइम रे गैमेट प्रोड्यूस करछि आ फीमेल अलगा टाइम रे गैमेट प्रोड्यूस करछि सेई टाइम रे कोन हबो तांको भितरे फ्यूजन हेई परिबनी मेल आ फीमेल गैमेट जा फल रे प्रोडक्शन कमिवो तो आमे इंड्यूस ब्रीडिंग काई करबा आमे हार्मोन्स देकी आमे हार्मोन्स इंजेक्ट करबा इनटू द फिश बॉडी so that at a time male will produce the male gamete and female will produce the female gamete so that there will be proper timing तांको टाइमिंग टा मैच हबो जा फल रे there will be fusion and fertilization between the sperm and egg. So induced breeding is what? It is a technique where the external hormones either natural hormone or synthetic are used to stimulate the ovulation in the fish or spermiogenesis. So female case रे ovulation को stimulate करिवो आउ male case रे spermiogenesis माने formation of sperm को से stimulate करिवो. Okay, तो सबुले the reproductive cycle of both sexes involve several gonadal development, growth and development. Okay, so gonads development habo gonad ru baharibo gametes. Gonad kon male gonad and female gonad. So male gonad will produce male gamete, female gonad will produce female gamete. तो तांकर डेवलपमेंटल टाइम सेम न थाए तो सेही केस रे हमें इंड्यूस ब्रीडिंग करिवा केमिति करिवा जदि सेटा गोटे हमें मेल को चाहूचे कि से तार स्पर्मियोजेनेसिस हो तो ताकू हमें मेल हार्मोन ताकू इंजेक्ट करिवा ता बॉडी रे मेल हार्मोन इंजेक्ट करिवा लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेन्स एई सब हार्मोन हमें मेल बॉडी रे इंजेक्ट करिवा जदि हमें चाहूचे फीमेल लो ओव्यूलेशन ताकू कंट्रोल करिया पई हमें चाहूचे फीमेल माने एग प्रोड्यूस करू तो हमें सेई केस रे फीमेल को इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन फीमेल हार्मोन अछि ताकू इंजेक्ट करिवा तो एटा कोन कहै छै इंड्यूस्ड ब्रीडिंग तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग रे हमें हार्मोन इंजेक्ट करिकि हमें आमो टाइम हिसाब रे फिश रो स्पर्मियोजेनेसिस आ ओव्यूलेशन टाको कंट्रोल करिवा तो जो हार्मोन हमें ताको सेठी इंजेक्ट करिवा आइदर दैट इज नेचुरल हार्मोन कि हमें ताको सिंथेटिक हार्मोन माने लैबोरेटरी रे हार्मोन टा बना हेइथिबो तो सही हार्मोन भी हमें यूज करि परिबा नेचुरल हार्मोन as well as synthetic hormone can be used for this induced breeding process. Okay, so the major players in the event of this system are gonadotropin releasing hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone सब सुनिछ follicle stimulating hormone, estrogen, progesterone. So एई सब hormones हमें यूज करि परिबा for the process of induced breeding. आ केते बेले induced breeding करिबा मैडम जते बेले एटा तो अलगा दिबो ह्यूमन पई जहा तारो फीस किबा अलगा सेटा पई फिश रो अलगा हां गोटे फिश रो हमें सेटा बाहर करिबा आ गोटे फिश रे ताकू इंजेक्ट करिबा कि किछि किछि हार्मोन्स सिंथेटिकली बना हेछि
ओके माने लैबोरेटरी से हार्मोन टाको तार स्ट्रक्चर देखि सेंति बना हिचे आमे सेही हार्मोन्स भी यूज करि परिबा तो आमे गोटे फिश रो सेटा एक्सट्रैक्ट करिवा आ गोटे फिश रे ताको इंजेक्ट करिवा ओके so this is the induced breeding. Next procedure for this induced breeding. So induced breeding by process कौन? First we will collect the pituitary gland. Pituitary gland कहीं collect करिवा? This gonadotropin releasing hormone कोड बाहरुची? Pituitary gland रो बाहरुची. तो fish रो हमें pituitary gland को बाहर करिवा. Pituitary gland तार head region रे अछि तो हमें गोटे forceps यूज करिके हेड रो बैक साइड रो अछि तार पिट्यूटरी ग्लैंड फिश रो तो हमें गोटे फोर्सेप यूज करिके तार पिट्यूटरी ग्लैंड को हमें बाहर करिवा ओके एबे से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करिवो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन ओके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एटा के ये बनौची पिट्यूटरी ग्लैंड बनौची इन केस ऑफ ह्यूमन एज वेल एज इन केस ऑफ फिश पढ़िछ कि नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन बनाए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लुटेनाइजिंग हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एटा कोड बाहरची पिट्यूटरी ग्लैंड रो Yes, ह्यूमन ma'am. केस रे भी से पिट्यूटरी ग्लैंड फिश केस रे भी पिट्यूटरी ग्लैंड तो फिश रो हेड रीजन रो पछपटे थाए पिट्यूटरी ग्लैंड तो ताको गोटे फोर्सेप यूज करके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सट्रैक्ट करा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड को बाहर कर निया जाए ओके now what we'll do we'll make the pituitary extract ओके पिट्यूटरी ग्लैंड ता नेला परे आमे पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट बनेवा जोटा के हमें फिश रे इंजेक्ट करवा पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट कोन सो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय फास्ट हमें कोन करबा ताको ग्राइंड करबा काको पिट्यूटरी ग्लैंड को हमें कोटा जो किछि भी होमोजेनाइजेशन प्रोसेस यूज करके ग्राइंड करबा मोटर पेस्टल हैला कि किछि सेमती स्ट्रक्चर यूज करके हमें ताको ग्राइंड करिया पाउडर बनेवा तारो ओके देन दैट इज सेंट्रीफ्यूज्ड ताको हमें सेंट्रीफ्यूज करबा तापरे सेंट्रीफ्यूज सुनिचो सेंट्रीफ्यूज सो सेंट्रीफ्यूज इज ए मशीन से मशीन रो कोन हुए हमें मास हिसाब रे हमें गोटे माने कंपोजिट कॉम्प्लेक्स को हमें सेपरेट करि परिबा हम पाखरे गोटे मिक्सचर अछि से मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन अछि आमे से सॉल्यूशन रो मिक्सचर टाको सेपरेट करि परिबा बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूज मशीन मैडम जो दही लहुणी प्रस्तुत करा जाय सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस से टाइप रो दहु लहुणी सेंट्रीफ्यूज ता केमिति काम करे जेम तम ग्राइंडर काम करे सेमति सेंट्रीफ्यूज मशीन ता काम जमा हुई आसी सेंट्रीफ्यूज हाँ तो सेठी तमे सैंपल सेंट्रीफ्यूज भितर रखिलो ट्यूब रे फाल्कन ट्यूब रे से ताको बहुत जोरे घुरेइबो तो घुरेया फल कोन हबो ता ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माने पड़िबो ता ऊपर जहा फल रे जोटा हेवी मटेरियल तळे सेटल हो जिवो जोटा लाइट मटेरियल सेटा ऊपर रहइबो तो हमें कोन करबा हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को हमें ग्राइंड करथिबा ताको पाउडर बनाइथिबा एबे ताको सेंट्रीफ्यूज करबा ओके तो सेटा किछ गोटे लिक्विड रे हमें ग्राइंड करथिबा गोटे सॉल्यूशन रे तो एबे जले ग्राइंड करबा ताको सेंट्रीफ्यूज करबा से तळे तार जो सॉलिड मटेरियल गुला तळे रहि जिवो आ तार जो लिक्विड मटेरियल जोटा एक्चुअली व्हिच कंटेन्स द हार्मोन्स सेडा ऊपर सब पानी हेकी भासिबो तो हमें से पानी टाको एबे कलेक्ट करबा जोटा को जाय सुपरनेटेंट ओके so the preserved gland tissue are dried over a filter paper and the required quantity is taken and weighed so homogenization is done with saline or distilled water at the rate of 20 mg per ml ओके तो हमें फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड टाको एक्सट्रैक्ट करबा ताको स्टोर करबा जे पद हमें यूज न करछे जदि तुरंत यूज करियार थिबा हमें तुरंत यूज करबा लेट्स हमें एक्सट्रैक्ट करिवार किछि टाइम पर हमको यूज करियार अछि तनो हमें ताको फर्स्ट स्टोर करिया केमती कोल्ड एनवायरनमेंट रे आइस रे तो जेटा हमको दरकार हमें कोन करिया 20 mg पर ml नै कि हमें ताको ग्राइंड करबा ओके माने ताको मिसेइबा माने 1 ml वाटर नेबा 20 mg पिट्यूटरी ग्लैंड नेबा आ ताको हमें मोटर पेस्टल ले ग्राइंड करबा एबे सेई जो सॉल्यूशन ता बनिला ताको ट्यूब रे नै कि कोन करबा सेंट्रीफ्यूज करबा तो सेंट्रीफ्यूज रे ऊपर जो वाटर पार्ट ता रहइबो ताको जाय सुपरनेटेंट ओके तो से सुपरनेटेंट पार्ट ता को हमें कलेक्ट करबा जोटा कि इट कंटेन्स द हार्मोन्स सी homogenization is done by using 20 mg per ml the homogenate is then centrifuged for 5 minutes at 5000 rpm ओके हमें 5000 rpm रे
आरपीएम कोन सेटा कोन 5000 आरपीएम रे कोन जानि परनु कहूची सेंट्रीफ्यूज आमे जो बुलाउची ना सेटा जेमति ग्राइंडर टा बुलाउची सेमति सेंट्रीफ्यूज टा भी बुलाउची ओके तो आरपीएम टा होचे रोटेशन पर मिनिट माने गोटे मिनिट रे केते रोटेशन से करूची ओके तो 5000 आरपीएम माने आमे जो सैंपल टा पुरैचे सेंट्रीफ्यूज भितरे से सैंपल टा को गोटे मिनिट रे 5000 थरो बुलाउची माने केते स्पीड रे बुलाउची ताको ओके सेही प्रेशर रे सेही फोर्स रे बुलेले ही हमर सुपरनेटेंट आ पेलेट अलगा हे जिवो ओके तो 5000 आरपीएम 5 मिनिट पय सेतरे सेंट्रीफ्यूज करा होला द सुपरनेटेंट इज नाउ टेकन इन ए सिरिंज फॉर द इंजेक्शन जो ऊपर जो लिक्विड पार्ट रहला आमे एबे ताको सिरिंज रे कलेक्ट करबा आ एबे ताको इंजेक्ट करबा इन द फिश रे इंजेक्ट करबा एबे को फिश रे जो फिश रे आमे चाहूचे इंड्यूस ब्रीडिंग करिया पई ओके so preparation first collection of pituitary gland over next preparation of pituitary extract now we have the hormones pituitary extract am पाखरे अछि आमे एबे ताको हार्मोन को डिलीवरी करिया काहा को into the fish the external delivery of pituitary extract can be done from one fish to another closely or distantly related fish groups transfer of pituitary extract between the closely related groups are termed as homoplastic injection ओके आमे थरो गोटे फिश रु तार एक्सट्रैक्ट बाहर करचे आ तार क्लोज रिलेटेड सेम स्पीसीज सेही सेम स्पीसीज फिश रे आमे ताको इंजेक्ट करचे ताको कह जाय होमोप्लास्टिक इंजेक्शन जदि डिस्टेंटली फिश माने अलगा अलगा स्पीसीज भीतर आमे ट्रांसफर करबा ताको कह जाय हेटेरोप्लास्टिक इंजेक्शन तो आमे जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट ता बाहर करचे एबे ताको आमे इंजेक्ट करबा कोथरे फिश रे जो फिश रे आमे इंड्यूस ब्रीडिंग करिया को चाहूचे से एक्सट्रैक्ट रे अछि कोन it contains the hormones okay which either helps in the spermiogenesis or it will help in the ovulation process female रे ovulation करेबो आ male रे spermiogenesis process करेबो तो हमें जदी distantly species रे ताको इंजेक्ट करबा ताको आज हेटेरोप्लास्टिक इंजेक्शन आ जदी सेम स्पीसीज रे करबा ताको आज होमोप्लास्टिक इंजेक्शन ओके डोजेज ऑफ हार्मोन माने केमिति हार्मोन आमे ताको इंजेक्ट करबा केते डोज देबा तो जनरली दुईटा डोज दिया जाए 2 doses of hormones are administered into the female body को दीटा डोज दिया जाए आउ मेल बॉडी को सिंगल डोज of the hormone is given see these are different types of induced breeding in homoplastic माने same species जदी okay कार पिट्यूटरी टू मेजर कार्प्स माने एठी मेजर कार्प को ही एठी पिट्यूटरी को दिया होची तो तारो डोज कोन रहबो डोज इज फीमेल रे 2 to 3 डोज दीटा रो तीनटा डोज दिया जिवो ओके तो एठी डिफरेंट डोजेस फॉर डिफरेंट फिशेस आर गिवन इन द टेबल नंबर 7 पॉइंट क्रॉस मार्क एक्स भलिया जो क्रॉस मार्क अछि सेटा कोन मेल को जो एमजी एठी हमें खाली फीमेल को दोचे फीमेल फॉर द ओव्यूलेशन प्रोसेस एठी हमें एठी फीमेल को टारगेट हेची ओ एक्स माने एठी किछि नाही माने मेल को दिया हैनी फीमेल को ओनली दुईटा रु तीनटा डोज दिया हैची ओके सिमिलरली हां तो एठी हेमोप्लास्टिक आ हेटेरोप्लास्टिक तो डिफरेंट जदी डिफरेंट स्पीसीज हला केते डोज दिया होची सेम स्पीसीज हला केते डोज दिया होची तार गोटे डाटा एठी देछि ओके सो टेबल टा को देखिबो Similarly, synthetic hormone can be also given. Synthetic hormone माने एडा कोन नेचुरल हार्मोन नेचुरली फिश प्रोड्यूस करूची आमे से फिश रु एक्सट्रैक्ट करले आउ फिश को इंजेक्ट करले किंतु सिंथेटिक हार्मोन भी किछि लैबोरेटरी रे बनै थांदी ओके जेमिति कि केमिकली जेमिति इंसुलिन हम बॉडी रे सिंथेसाइज होची सिमिलरली synthetic insulin can be also produced in the laboratory similarly synthetic hormones can be also produced in the laboratory तो synthetic hormone भी हमें ताको इंजेक्ट करि परिबा to initiate the spermiogenesis and ovulation in fishes तो synthetic जदि synthetic hormones होउची तार भी डोजेज अलगा रहइबो सी हियर फीमेल और मेल रे डोजेज केमति रहउची if it is synthetic hormone
Next, this is the global survey of fish breeding practices. So globally गोटे survey करा ହେଇची को एरिया रे को कंट्री रे fish breeding practices कौन कौन सब follow होची. Okay, so in Asia, see in Asia region, Asia रे there are different type of culture practice like ponds, pens, caves. आमे जति के type रो सब पढ़िले ना, तो को continent रे को process सब follow होची. So this is a global data which shows what different types of this aquaculture are followed in different continents and different areas of the globe. Okay, এটা নিজে পড়িব. Next, coming to the cryopreservation of gametes. Okay, gametes মানে কোন? We know male gamete and female gamete. Male gamete is sperm and female gamete is egg or ovum. So how will preserve these gametes? So there is one method of preservation of the gamete that is known as cryopreservation. Cryopreservation is the preservation of gamete at a very low temperature. That temperature is minus 190 degree Celsius. So minus 190 degree Celsius, 196 degree Celsius रे आमे gametes को preserve करी रखिवा. Okay, and whenever it is required, again we'll bring those gamete and can be used. आमे केते बेले cryopreservation करिवा? Same thing, induced breeding जेमति आमे करूचे, जदि male आउ female रो ovulation आउ spermiogenesis time जदि same नथिबो, सेई केस रे आमे induced breeding करचे. Similarly, cryopreservation भी आमे केते बेले करिवा? सेई सेम जिंस जेते बेले सेई मेल आउ फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग टाइम टा वेरिएट करिवो. लेट्स मेल आगो गैमेट प्रोड्यूस करछि फीमेल परे, तो सेई केस रे हमें कोन करबा? मेल गैमेट टा को आनि कि क्रायो प्रिजर्व करथिबा until the female produce the gamete. जेतले फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करिवो, अगेन जो क्रायो प्रिजर्व गैमेट टा मेल गैमेट टा को हमें यूज करबा इन द breeding process. Okay, so cryopreservation is what? It is a method, it is the method or technique uh, of exposing living cells to a very low temperature, that is minus 190 degree 96 degree Celsius, to arrest its physiological activities without damaging its structure and functional integrity. So जेतले 196 degree Celsius रे हमें सेल को गोटे सेल गैमेट टा कोन? इट इज अ सेल और नॉट? एटा गोटे सेल. तो सेल को हमें प्रिजर्व करबा minus 196 degree Celsius रे. तो सेही टेम्परेचर रे कोन हबो? तार फिजियोलॉजी फिजिकल एक्टिविटी सब बंद हो जिवो. फिजियोलॉजी माने ता भितरे जति की प्रोसेस होउतला सेल भितरे सेगुडा सब अरेस्ट हो जिवो, बंद हो जिवो. आ सेल टा सेही पोजीशन रे अरेस्ट हेकी रहइबो. तार किछि फंक्शन हबोनी, से मैडम अरेस्ट जे हेकी रहइबो. ये कि रहइबो ना नॉन लिविंग सेटा लिविंग हेबो तो? हाँ, लिविंग हेकी रहइबो, किंतु तार किछि प्रोसेस हबोनी. ता सब प्रोसेस पूरा अरेस्ट हो जिवो. जेतेबेले पुनी क्रायो प्रिजर्वेशन हमें बाहर करि देबा, माने सेही टेम्परेचर रु बाहर को नै जिबा, अगेन दैट सेल विल बिकम फंक्शनल. से तार नॉर्मल फंक्शन करिवो. बुझियला? सेटा होची क्रायो प्रिजर्वेशन रो बेनिफिट्स. क्रायो प्रिजर्वेशन रे आमे तार नॉर्मल फिजियोलॉजी को बंद करै कि रखिबा. देन जेतले हमकु दरकार आमे जेतले क्रायो माने 190 डिग्री सेल्सियस जोटी टेम्परेचर अछि से जेतले बाहर करै कि आमे ताकू नै जिबा. ओके, देन तार नॉर्मल फिजियोलॉजी विल again come back. आमे सेही सेल टा को एबे यूज करि परिबा फॉर द ब्रीडिंग प्रोसेस. ओके, मेकानिज्म ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन. सो आमे क्रायोप्रिजर्वेशन केमिति करिबा? So we will first collect the gamete collect करिबा whether that is male gamete or female gamete. Okay, so cryopreservation involves a series of complex process of heat and water exchange among the cells and surrounding medium during the freeze and thaw steps. Freeze and thaw step माने freeze माने होची freeze कर देबा, माने ताको 196 डिग्री सेल्सियस रे से पूरा freeze हे गला, माने arrest हे गला. thaw माने again freeze रो हम जदी बाहर करनबा से धीरे धीरे तार नॉर्मल टेम्परेचर को जेतला आसीबो सेटा को जाय thaw. freeze and thaw. So freeze आउ thaw मेथड रे हमें तार फिजियोलॉजी को अरेस्ट करि परिबा और अगेन तार फिजियोलॉजी को it will come back to its normal physiology. Okay, so coming to the cryopreservation of fish sperm. So either we'll store the male gamete that is a fish sperm or female gamete that is the fish ovum. तो हमें fish sperm रो cryopreservation केमति करिया? First हमें कौन करिया? Milled collection माने the liquid containing the sperm.
ओके केबे केबे वीडियो रे देखिथिबो फिश मानकर स्पर्म कलेक्ट करा जाय केमिति ताकू पूरा ता बॉडी को पूरा प्रेस करा जाय ता एब्डोमिनल पोजीशन को प्रेस करके ता भितरु व्हाइट व्हाइट लिक्विड बाहरे ओके सेटा होची मिल्ट मिल्ट कोन इट इज ए लिक्विड कंटेनिंग द स्पर्म्स ऑफ द फिश तो आमे ताकू फर्स्ट कलेक्ट करिया केमिति फिश रो एब्डोमेन माने मेल फिश जोटा मेल फिश रो एब्डोमेन पार्ट को प्रेस करिया फल रे मिल्क ता बाहर को आसीबो एबे से मिल्क को आमे नै कि तारो इवैल्यूएशन ऑफ स्पर्म क्वालिटी फर्स्ट तारो आमे बिफोर द क्रायो प्रिजर्वेशन वी शुड लुक वेदर द स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी और क्वालिटी जदी ठीक थिबो देन वी विल गो फॉर द क्रायो प्रिजर्वेशन जदी स्पर्म वायबल ही नथिबो स्पर्म लाइव नथिबो आमे ताको क्रायो प्रिजर्वेशन करी किछि लाभ नै दैट इज वेस्ट ऑफ मनी सो आफ्टर द मिल्क कलेक्शन वी विल लुक इनटू द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द स्पर्म whether the sperm is motile or not क्वालिटी तार ठीक अछि कि नै तार क्वांटिटी स्पर्म काउंट ठीक अछि कि नै मिल्क रे तो सेगुडा हमें देन चेक करिवा देन विल गो फॉर द sperm density so we'll measure the density of sperm माने sperm count केते sperm रहउची मिल्क रे then we'll go for the sperm motility sperm whether it is motile or not motile नथिले से एक को फ्यूज करि परिबोनी कि जाइगोट प्रोड्यूस हेई परिबोनी ओके तो आमे मिल्क कलेक्शन पर फर्स्ट आमे स्पर्म रो क्वालिटी क्वांटिटी सब चेक करिया तार मोटिलिटी चेक करिया देन विल गो फॉर द मीडिया प्रिपरेशन ओके स्पर्म जो ग्रो हो जो मीडिया एंड रिएजेंट ओके तो स्पर्म को हमें फर्स्ट डाइल्यूट करिवा सो मिल्क इन द नेटिव फॉर्म इज नॉट सुटेबल फॉर द क्रायो प्रिजर्वेशन आमे जो मिल्क ता कलेक्ट करा हेची so that is having a large number of sperm आमे ताको डायरेक्टली क्रायो प्रिजर्वेशन करिवानी ताको फर्स्ट डाइल्यूट करिवा ओके डाइल्यूट कले तारो स्पर्म रो काउंट कमिवो आ सेही डाइल्यूट एटा को आमे नै कि क्रायो प्रिजर्वेशन करिवा मीडिया एंड रिएजेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज तो आमे ताको एमिति मीडिया और रिएजेंट देबा कि स्पर्म रो क्वालिटी मेंटेन हेकि रहइबो तार मोटिलिटी मेंटेन हेकि रहइबो ताको डैमेज होबोनी ओके देन वी विल ऐड द क्रायो प्रोटेक्टेंट and extenders are the media that satisfy the function of preventing sperm motility energy source ame एठी दीटा जिंस ऐड करिवा एक्सटेंडर एंड क्रायो प्रोटेक्टेंट ओके एक्सटेंडर कोन जे कि एटा गोटे मीडिया जे स्पर्म रो मोटिलिटी स्पर्म रो काउंट और स्पर्म रो डेंसिटी को मेंटेन करी रखिबो एक्सटेंडर्स आर द मीडिया माने न्यूट्रिएंट मीडिया that satisfy the function of preventing sperm motility energy source of the cells during the storage period तो से स्टोरेज पीरियड रे स्पर्म रो मोटिलिटी स्पर्म रो काउंट ताको मेंटेन करी रखिबो एक्सटेंडर ओके तो से एक्सटेंडर रे कोन अछि एक्सटेंडर्स आर यूजुअली saline sugar isotonic solution composed of inorganic salts like NaCl CaCl2 KCl NaHPO4 तो सेठी किछि किछि माने सॉल्ट थाए से सॉल्यूशन रे आउ isotonic solution थाए these are isotonic solution containing sugar and salts eta kon extender and next is cryoprotectants are the low molecular weight reagents which lower the freezing point of the solution thereby suppressing the cryo injuries actually cryoprotectant रो काम कोन जे हाई माने लो टेम्परेचर रे जे प्रोटेक्ट करिवो सेल्स को तो हमको क्रायो प्रोटेक्टेंट भी ऐड करिया पड़िबो माने क्रायो प्रिजर्वेशन में कोन होची आमे गोटे चैम्बर जोटी कि -196 डिग्री मेंटेन होची सेही चैम्बर रे आमे नै कि सेल को रखिबा तो बिफोर द सेल इज केप्ट देयर आमे सेठी कोन कोन ऐड करिबा फर्स्ट आमे एक्सटेंडर ऐड करिबा ओके जे कि स्पर्म रो क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करी रखिबो आ कोन ऐड करिबा क्रायो प्रोटेक्टेंट्स दे आर used to protect the cells from the very low temperature रे cells को से protect करिवो so these cryoprotectants are generally what there are two types permitting and non permitting these protectants they are made up of like से कौन रहे this contains glycerol DMSO okay glycerol से थाई से cryoprotectant रे DMSO is dimethyl sulfoxide methanol तो एगुडा सब आमे यूज करछ कोथरे cryoprotectant रे okay so this is how we will cryopreserve the fish sperm so first we will collect the milk then we will check the quality of the sperm in the milk quality and quantity then we will go for the
जो प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट जो रिएजेंट रे हमें ऐड कोन करछे स्पर्म सहित स्पर्म को हमें फर्स्ट डाइल्यूट करूचे आ से डाइल्यूट स्पर्म रे हमें एक्सटेंडर ऐड करबा आ क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करबा देन वी विल क्रिएट केप्ट इन द -196 डिग्री सेल्सियस okay then after keeping so now the cells are preserved from बहुत दिन जाए प्रिजर्व हेक रहइबो हमको अगेन पुनी जतले दरकार हम अगेन दैट विल बी हम ताको बाहर को बाहर करबा सो अगेन दैट इज थर्ड माने थॉइंग प्रोसेस माने ताको ठंडा करिया को जाय थॉइंग जो थॉइंग प्रोसेस रे अगेन तार हम नॉर्मल टेंपरेचर को जतले आसी जिवो अगेन दैट सेल विल बिकम एक्टिव हम ताको बे यूज कर परिबा ब्रीडिंग प्रोसेस रे बुझला नेक्स्ट इज एग एंड एम्ब्रियो क्राफ्ट हां गुड इवनिंग कोन हला मैम एक्चुअली स्पर्म जति हमें हेलो 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 हां हां को हेबे यस मैम एक्चुअली हमें जति स्पर्म प्रिजर्व करके रखिबा देन मैक्सिमम केते दिन जे सेटा प्रिजर्व होई परिबो क्रायो प्रिजर्वेशन कैन बी ए माने बहुत दिन जाय रही परिबो वर्ष वर्ष धरि रही परिबो से क्रायो प्रिजर्वेशन इवन -20 डिग्री जोटा टेम्परेचर सेटा तो -196 हलानी टेम्परेचर -20 रे भी आमे बहुत दिन जाय ताको प्रिजर्व करी रखि परिबा मु निजे माने लैबोरेटरी रे काम करछि ना मु पीएचडी करूथली ओके तो पीएचडी मु निजे फंगस रा सेल को बहुत दिन जाय प्रिजर्व करी रखिछि केमिति तमे त ग्लिसरॉल ऐड करबो हमर तो क्रायो प्रिजर्वेशन नथिला माने हमर लैबोरेटरी रे हमर -20 डिग्री थिला -20 डिग्री जे हमें वर्ष वर्ष धरि हमें गोटे सेल को प्रिजर्व करी रखि ताऊ तो -196 डिग्री रे तो आहुरी अधिक दिन रहइबो हमें जे पर्यंत हमकु दरकार से पर्यंत हमें ताकू क्रायो प्रिजर्व करी रखि परिबा वर्ष वर्ष धरि हमें कर परिबा नेक्स्ट इज क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एग एंड एम्ब्रियो ओके सेटा हमें स्पर्म रो क्रायो प्रिजर्वेशन कले एटा एग एंड एम्ब्रियो रो माने सिमिलरली एग एंड एम्ब्रियो इज कलेक्टेड फ्रॉम द फिश ओके तार हमें क्वालिटी चेक करबा क्वांटिटी चेक करबा एंड दैट इज preserved by using the extender and by using the cryoprotectant same method okay there we are preserving the sperm here we are preserving the egg and the embryo next coming to the transport of eggs fry and fingerlings and adults okay तो हमें ट्रांसपोर्ट केमती करबा व्हाट आर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस so first there are pre-transport maintenance first हमें capture करिबा what will capture either adult हो कि fingerlings माने small fishes ताको fingerlings को जाए तो हमें ताको capture करिबा capture करिया पले pre-transport maintenance ताको करिबा then capture एटा तमे निजे पढि दबो ओके टाइम होनी आउ will move to the next part ओके एटा कंप्लीटली एटा तमे पढियो जदी पूरा बुझी परिबो किछि नाही आ भितरे बुझिला सबु लाइन बाय लाइन पढेबाटा पॉसिबल नो देन प्री ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस रहइबो ओके फर्स्ट हमें कैप्चर करिबा देन हैंडलिंग टेक्निक देन प्री कैप्चर सॉरी प्री ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस ट्रांसपोर्ट पूर्वरु ताकू केमिति हमें माने गोटे कंटेनर रे ताकू रखिबा कंटेनर रे कोन कोन एनवायरनमेंट मेंटेन करिबा हमें जो कंटेनर रे तार ट्रांसपोर्ट हबो ओके देन फिश पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट केते टाइप रो थाए वन इज ओपन टाइप वन इज क्लोज टाइप ओके ओपन टाइप रे कोन सेठी हमें ताकू हमें टेंपरेचर तार पीएच सब माने वी कैन चेंज ओपन टाइप रे किंतु क्लोज सिस्टम रे पूरा क्लोज सिस्टम रे से ट्रांसपोर्ट होतबो हमें जहा एनवायरनमेंट इनिशियली देथिले सेटा ही मेंटेन हबो इट कैन नॉट बी चेंज्ड open system and closed system packaging okay so packaging out transport टा निजे पढो जहा भी जदी न बुझी पारला मते फोन करी पचारिबो okay next we'll move to the next unit number 8 so unit number 8 it is the role of genetics in aquaculture so how will we apply the genetics for the process of aquaculture genetic रोटी काम कोन जा पर हमें बेसी रु बेसी फिश ग्रोथ हाउ डेवलपमेंट तार प्रोडक्टिविटी बढ़ाई परिबा ओके
So how will we increase the productivity? By manipulation of gene. आमे क्रोमोसोम बा जीन को मैनिपुलेट करिकी कहार फिश रो आमे तार प्रोडक्टिविटी और तार ट्रेट को चेंज करि परिबा. ओके तो जेनेटिक्स माने every character in our body that is controlled by what? Gene ଆଉ chromosome ही control करछि. Similarly fish रो भी तार chromosome ଆଉ gene control करछि. तो आमे एमिति करबा तार chromosome ଆଉ gene level रे तार चेंज करबा जहा फल रे तार character change हबो. Let's productivity gene को आमे गोटे productivity gene ता भितरे पुरै दैछे तो the production will be increased. तो आमे genetic manipulation सब कोन कोन fish रे करि परिबा जहा फल रे हमर productivity बढ़िबो. So this first is coming to the chromosomal manipulation. Chromosomal manipulation कोन आमे तार chromosome number को change कर दबा कहारो fish को. So this chromosome number can be changed. It can be made to triploidy, tetraploidy. Triploidy is a condition what? When the chromosome number is 3 sets. जेतले तीनीटा सेट रो क्रोमोसोम रहिबो ताको ट्रिप्लॉइड कंडीशन कुआ जाय. Generally fishes are what? They are diploid. Diploid माने दीटा सेट रो क्रोमोसोम ताको बॉडी रे थाए कि सेल रे थाए. ट्रिप्लॉइड कंडीशन कोडा जेतेबेले तांकर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट ऑफ क्रोमोसोम becomes 3 सेट. तांकर दीटा सेट बदले तीनटा सेट क्रोमोसोम रहिबो सेटा कुआ जाय ट्राइप्लॉइड. Similarly tetraploid. Tetraploid कोन जेतले क्रोमोसोम सेट चारटा रहिबो. Okay, so the phenomenon of possessing 3 sets of chromosome is called triploid. तो ये कंडीशन टाको ट्रिप्लॉइड कंडीशन को जाय केतले जेतले तीनटा सेट रो क्रोमोसोम रहिबो फिश रे. तीनटा दीटा सेट बदले तीनटा सेट रहिबार फायदा कोन होबो? That fish will have larger in size. से फिश रो साइज लार्ज होबो किछि बेटर कैरेक्टर तार प्रोड्यूस होबो जो कैरेक्टर टा कि हमकु दरकार. तो मेनली हमको कोन दरकार? फिश रो साइज दरकार. प्रोडक्शन केमिति बढ़िबो जेतले फिश रो साइज टा बढ़िबो. तो क्रोमोसोम नंबर जदी बढ़ुची फिश रो साइज भी बढ़िबो. तेनु हमें क्रोमोसोम नंबर टा को बढ़िया को चेष्टा करबा केमिति? बाय मेकिंग द ट्रिप्लॉइड फिशेस. ट्रिप्लॉइड फिशेस हमें केमिति बनेबा? सी द डायग्राम. डायग्राम टा देखो त माने तुम बुक खोली छ ना एटा ही देखुछ स्क्रीन टा? एटा देखुछु. ओके लिखुची मैडम. See here the diagram. Okay, this is the unfertilized egg. Unfertilized egg रे तार कोरियन बिलियन सब yolk थाए. Okay, कोरियन are the extra embryonic membrane. Okay, unfertilized egg then there is it is allowed to the entry of the male gamete. Male gamete is spermatozoa. Now spermatozoa enters the female gamete, that is the egg. Next what we'll do, we'll arrest in the second polar body. तुम्हें जनरली पढ़िथिबो जो oogenesis रे पढ़िचो. There is first meiotic division, second meiotic division. First meiotic division ने कोन होची? There is formation of one large egg Large and a small polar body. गोटे small polar body बनुची आ गोटे large egg बनुची. Okay, then there is entry of the sperm. Sperm रो entry हल्ला पर second meiosis cell division हुए. सेकेंड मेयोसिस सेल डिवीजन आगो हुएनी केतेबेल हुए जेतेले स्पर्म एंट्री करिवो एग भितरे देन सेकेंड मेयोसिस सेल डिवीजन होउते जोथरे की गोटे पुनी अगेन लार्ज एग आउ सेकेंड पोलर बॉडी बने. तीनटा पोलर बॉडी ना. हां तीनटा पोलर बॉडी हुए ना. हां फर्स्ट पोलर बॉडी एगे डिवाइड हे कि दीटा पोलर बॉडी सेडु बनिबो आ जो लार्ज एग रो आ गोटे पोलर बॉडी फॉर्मेशन हबो. ओके, तो आफ्टर द स्पर्म इज फ्यूज्ड एबे एग सहित स्पर्म फ्यूज हे गला. फ्यूज होला पर जो सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन हेइतांदा सेटा को अरेस्ट कर दियंती. अरेस्ट कर देले कोन हबो? एबे ओवम रे दीटा सेट क्रोमोसोम अछि जोटा कि पोलर बॉडी रे गोटे सेट क्रोमोसोम बाहरी जाइतांदा सेटा बाहरलानी सेकेंड पोलर बॉडी रे. ता माने एबे एग भितरे केतरा सेट क्रोमोसोम रहिला? गोटे सेट स्पर्म रु आसीची आ दीटा सेट तार ऑलरेडी अछि. तो तीनटा सेट क्रोमोसोम होला तार. राइट, बुझी होची तीनटा सेट केमती बनिला? जो गोटे सेट क्रोमोसोम पळै थांदा सेकेंड पोलर बॉडी रे से सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन टाकू ही अरेस्ट कर देले. केमिति अरेस्ट कले? बाय प्रोवाइडिंग हीट शॉक. सेडी हीट शॉक दिया हैची 30 रु 42 डिग्री सेल्सियस 5 मिनिट्स पइन जदी हमें एक को देबा सेडी सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन आ हबनी. कोल्ड शॉक देई परिबा हमें 5 डिग्री रु 11 डिग्री 30 रु 60 मिनिट्स हमें जदी देबा 5 रु 11 डिग्री सेल्सियस then also that will inhibit the formation of second polar body.
तो एई भलिया आमे गोटे ट्रिप्लॉइड एग बनै परिबा सो से ट्रिप्लॉइड एग ता आगो को डेवलपमेंट हबो गोटे फिश प्रोड्यूस हबो सेठू तार साइज विल बी लार्जर इन कंपैरिजन टू द डिप्लॉइड फिशेस बुझेला सो दिस इज द ट्राइप्लॉइड कंडीशन ट्राइप्लॉइडी similarly tetraploidy tetraploidy is what when the chromosome number or set of chromosome is 4 so tetraploid is a phenomenon of having 4 sets of chromosome in an individual species gote machore jetale charita set ro chromosome rahibo taku kwa jaye tetraploidy tetraploid ame kemti baneiba similarly see the diagram here it is the unfertilized egg तो tetraploid माने चारटा सेट रो क्रोमोसोम रहइबो unfertilized egg okay egg fertilized हेइनी that allowed to fuse with the spermatozoa now this unfertilized egg is having n number of chromosome so there n number of chromosome achi okay then it is fusing with the spermatozoa that forming the 2n 2n hela be माने एठी सेकंड पोलर बॉडी भी फॉर्मेशन होउची फर्स्ट पोलर बॉडी होउची सेकंड पोलर बॉडी होउची तो ई एग रो एबे केते क्रोमोसोम नंबर अछि n ओके आफ्टर दीटा पोलर बॉडी फॉर्मेशन हला परे एग रो नंबर ऑफ क्रोमोसोम केते n अछि माने गोटे सेट रो क्रोमोसोम अछि सेठी एबे स्पर्म सहित से फ्यूज हला आ गोटे सेट क्रोमोसोम आसला स्पर्म रे एबे तार दीटा सेट क्रोमोसोम हला जोटा कहै जाय 2n माने दीटा सेट रो क्रोमोसोम सो स्पर्म सहित फ्यूज हला परे सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन हला सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन हला परे दैट फॉर्म्स अ डाइप्लॉइड जाइगोट एबे जो जाइगोट ता फॉर्मेशन हेछि दैट इज कोन दैट इज हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जोटा कि डिप्लॉइड कहै जाय ताकू हमें टेट्राप्लॉइड केमिति बनेबा जेतेले जाइगोट ता डिवाइड हबो जाइगोट रो ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबो जाइगोट फर्स्ट क्लीवेज हबो सेकंड क्लीवेज हबो एई भलिया गोटे जाइगोट रु दीटा सेल रु चारटा रु आठटा एम्ति सेल नंबर बड़ी बड़ी फिश रो साइज बढ़िबो राइट जेतेले फर्स्ट सेल डिवीजन हबो जाइगोट रे फर्स्ट सेल डिवीजन जेतेले न्यूक्लियर डिवीजन हे गला किंतु सियाउ सेल डिवीजन करिया को दबनी माने क्रोमोसोम डिवाइड हे कि दीटा हे गला किंतु सेल टा गोटे अछि तेणु गोटे सेल भितर केतरा क्रोमोसोम रहला चारटा क्रोमोसोम सी दिस इज द डिप्लॉइड जाइगोट prevent the first mitotic division first mitotic cell division को हमें अरेस्ट कर देबा माने माइटोटिक सेल डिवीजन को हमें बंद कर देबा केमिति से हीट शॉक ट्रीटमेंट हबो कोल्ड शॉक यदि सेल को हमें हीट शॉक और कोल्ड शॉक देबा से सेठी अरेस्ट हे जिवो तो एटी फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन अरेस्ट हे गला किंतु न्यूक्लियर डिवीजन हे जाईची न्यूक्लियर डिवीजन हेची माने दीटा सेट रु चारटा सेट क्रोमोसोम बनी जाईची किंतु सेल दीटा होउनी न्यूक्लियर डिवीजन परे जदी साइटोप्लाज्म डिवीजन हेले ही दीटा सेल हबो तो साइटोप्लाज्म डिवीजन टाको रोकी दोची so that leads to formation of a tetraploid fish so this is a tetraploid fish that is having four set of chromosome तो फोर सेट ऑफ क्रोमोसोम हेबा बदले कोन होइची सेही सेम तार ग्रोथ बढ़ी जाउची ता साइज बढ़ी जाउची जहा फल रे हमकु प्रोडक्शन बढ़ी जिवो प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड बुझियला टेट्राप्लॉइड फिश next another process is gynogenesis gynogenesis is what it is a process of transforming only the maternal chromosome gyno means what female or maternal तो आमे गोटे फिश बनेबा जोटा केवल एग रु ही बनिथिबो तार सेठी स्पर्म रे किछि रोल नाही स्पर्म सेठी फ्यूज हे नथिबो सेटा केते बेला आमे करबा लेट्स गोटे फिश फीमेल फिश दैट हैव ए बेटर क्वालिटी तार साइज बहुत बड़ अछि फिश रो माने टेस्ट भी बहुत भलो तो आमे चाहिबानी से आउ को स्पर्म सहित फ्यूज हेले मे बी ता कैरेक्टर ता सेठी आउ एक्सप्रेस हबोनी तो आमे कोन चाहिबा कि आमे एमिति गोटे फिश प्रोड्यूस करबा जोटा खाली फीमेल रो प्रोड्यूस हबो मेल रो सेठी किछि रोल हबोनी सेही केस रे आमे को प्रोसेस फॉलो करबा गाइनोजेनेसिस प्रोसेस what is gynogenesis process it is the process of transferring trait to the progeny exclusively from the maternal parent माने only from the mother दीटा parent थांती गोटे paternal parent गोटे maternal parent is the mother and paternal parent is the father तो गाइनोजेनेसिस रे कोन आमे गोटे फिश बनेबा जोटा कि केवल मैटरनल ओरिजिन रु आस्थिबो केवल मैटरनल पेरेंट रु आस्थिबो the progeny fish produced through gynogenesis are called gynogenes
Okay, these gynogens contain both set of chromosomes, तार दीटा जाको set of chromosome कोठी आसुची mother रू आसुची exclusively from the maternal parents. Okay, so these gynogens can be produced by two ways. दीटा method रे हमें gynogens produce करि परिबा by meiotic and mitotic gynogenesis. Meiotic gynogenesis and mitotic gynogenesis. So how this meiotic and mitotic gynogenesis is, see the diagram here. This 8.4 diagram. This is the meiotic gynogenesis. Okay, see here. This is unfertilized egg that is containing n number of chromosome, mean a single set of chromosome. Then the entry of DNA inactivated male. Okay. Acha. Without fusing with the male gamete, केबे भी zygote formation हबनी. जाइगोट फॉर्मेशन केतेबेले हबो जेतेले गोटे फीमेल गैमेट मेल गैमेट सहित फ्यूज हबो सेतेबेले ही गोटे जाइगोट प्रोड्यूस हबो जाइगोट प्रोड्यूस होला पर एम्ब्रियो प्रोड्यूस हबो देन सेटु गोटे फिश प्रोड्यूस हबो जे पर्यंत जाय फ्यूज हेइनी सेठी जाइगोट प्रोडक्शन हबोनी तो हम एटी कोन करछे मेल गैमेट को इनएक्टिव कर दोजे माने मेल गैमेट रो क्रोमोसोम को हमें डिस्ट्रॉय कर दोजे ओके आ सेही मेल गैमेट टा को एबे अलाउ करछे फ्यूज करिया पई का सहित female gamete unfertilized egg saito. So a unfertilized egg is fused to a sperm which is having inactivated DNA. See here the DNA inactivated spermatozoa. So this is a sperm in which the DNA is not active. DNA is inactivated. So ता सहित हमें फ्यूज कले तो एबे जो जाइगोट टा बनिबो that zygote contain what? Only the chromosome from the mother. कहीं आमे स्पर्म रो गैमेट स्पर्म रो क्रोमोसोम को आमे डिस्ट्रॉय कर देइचे तेणु जाइगोट रे एबे जो क्रोमोसोम हबो दैट इज ओनली फ्रॉम द एग माने ओनली फ्रॉम द मैटरनल ओनली फ्रॉम द मदर. Okay, so entry of DNA inactivated male. Now it is from the zygote and that zygote contains how many number of chromosome? One set number of chromosome. कहीं कारण स्पर्म रो किछि क्रोमोसोम आसीनी एग रे जेते की क्रोमोसोम थिला only one set of chromosome सेटा एबे अछि कोथरे जाइगोट रे. ओके तो फर्टिलाइजेशन हैला परे अगेन सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन हबो सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन हैला परे सो दिस सेकंड पोलर बॉडी फ्यूज विथ द एग न्यूक्लियस तो जो सेकंड पोलर बॉडी तार फॉर्मेशन हबो सेही सेकंड पोलर बॉडी को हमें अलाउ करिवा से फ्यूज हबो का सहित जाइगोट सहित एबे सेकंड पोलर बॉडी रो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछि आउ itself जाइगोट रो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछि सेटा तले फ्यूज हबो केते हबो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हबो कि नहीं तो तार 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी रहिला प्लस एठी मेल रो किछि रोल नाही मेल गैमेट क्रोमोसोम ही दोउनी तेणु केवल मैटरनल ओरिजिन रो क्रोमोसोम आसिला आउ 2n नंबर भी मेंटेन हैला. सिमिलरली माइटोटिक गाइनोजेनेसिस मैडम माइटोटिक गाइनो आसुनी तो ताले एठी जो इनएक्टिवेटेड मेल रो जो डीएनए इनएक्टिवेटेड मेल रो तार एटा को फ्यूज काई करा होची एंट्री काई करा होची देखो जाइगोट फॉर्मेशन हेबा पई मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फ्यूज्ड सेही प्रोसेस न हैला जाय गैमेट प्रोडक्शन हबनी भितरे ओके मैम क्रोमोसोम जाउची कि न जाउ सेटा अलगा कथा किंतु टू प्रोड्यूस ए जाइगोट देयर मस्ट बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हबो जाइगोट प्रोड्यूस होआ पई नल जाइगोट प्रोड्यूस हबनी किंतु जेहेतु हमें क्रोमोसोम टा को इनएक्टिव कर देइचे तो ओनली जाइगोट भितरे जो क्रोमोसोम रहइबो दैट इज ओनली द maternal chromosome that is the chromosome from the mother not from the father बुझेला तो एबे सेठी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछि जेतेले फ्यूज हे जाउची जाइगोट अगेन डिवाइड हे कि सेतु सेकंड पोलर बॉडी बाहरिबो ओके सी व्हिच इज द सेकंड मेयोटिक सेल डिवीजन सेकंड पोलर बॉडी टा जेतेले फॉर्मेशन होची ता कोन को जाउची मेयोसिस 2 तो मेयोसिस 2 रे जो सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन होची सेकंड पोलर बॉडी रे भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछि तबे सेकंड पोलर बॉडी और जाइगोट टा को अलाउ करा होची फ्यूज करिया पई तो एबे जो जाइगोट रे जो क्रोमोसोम दैट इज द क्रोमोसोम फ्रॉम द जाइगोट एंड क्रोमोसोम फ्रॉम द सेकंड पोलर बॉडी तो तार 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैला सो सेटा को कहा जाउची मेयोसिस मेयोटिक गाइनोजेनेसिस तो मेयोटिक सेल डिवीजन टाइम रे गाइनोजेनेसिस होची ए जो पोलर बॉडी टा को हमें फ्यूज कले दैट इज ड्यूरिंग द मेयोसिस सेल डिवीजन 2 तेणु ता कहा जाउची मेयोटिक गाइनोजेनेसिस. Similarly माइटोसिस गाइनोजेनेसिस कोन आमे माइटोटिक सेल डिवीजन टाइम रे गाइनोजेनेसिस करबा
Okay, see here the process. It is the unfertilized egg, okay, allowed to fertilized with the inactivated sperm. Inactivated again say same ଜିନିଷ, inactivated sperm ସହିତ ତାକୁ fuse କରାଗଲା. Entry of the male gamete. Okay, it will produce the similarly the second polar body. Second polar body formation ହବ. Okay, second polar body will go out. Second polar body ପଳେଇବ ବାହାରକୁ. ଏଠି second polar body fuse ହବନି. Second polar body formation ହେଲା ପରେ it will detach from the egg, detach from the zygote. Now how it will produce the 2n? ଏବେ zygote ରେ କ'ଣ ଅଛି? n number of chromosome ଅଛି. But fish ରେ 2n number of chromosome ନିହାତି ଦରକାର. So 2n କେମିତି ହବ? ଯେତେବେଳେ zygote ର first division ହବ, first mitotic cell division, ତାହେଲେ ଗୋଟେ cell ରୁ ଦିଟା cell ହବ zygote ରେ. ତ ସେଇ mitotic cell division ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢିଲେ. Okay, 4n in case of tetraploidy. ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଭିଜନ କରେଇ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜିକ ଡିଭିଜନ ଆଉ ଆଲାଉ କରିନେ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଫଳରେ ତା ଭିତରେ ଏବେ 4 ସେଟ୍ ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ। ତ ଏଠି n ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ, n ସେଟ୍ ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଭିଜନ କରେଇବା କିନ୍ତୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜିକ ଡିଭିଜନ ଆଉ କରିବାକୁ ଦେବାନି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହିବ? Again 2 set of chromosome will be there, so that will produce 2n number of chromosome. ତ ଏଠି ଯୋଉ ଗାଇନୋଜେନେସିସ୍ ହଉଛି କୋଉ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ଟାଇମ ରେ ହଉଛି? ମାଇଟୋଟିକ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ। କାରଣ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ରୁ ଦିଟା ସେଲ୍ ଯୋଉ ହଉଛି ଜାଇଗୋଟ, ସେଟା କୋଉ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହଉଛି? ମାଇଟୋସିସ୍, ନଟ୍ ମେଓସିସ୍। କିନ୍ତୁ ଜାଇଗୋଟ ରୁ ଯୋଉ ପୋଲାର ବଡିଟା ବାହାରି ଯାଉଛି ସେଟା କ'ଣ? ମେଓସିସ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ। ତେଣୁ ମେଓସିସ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ଟାଇମ ରେ ହଉଛି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଓଟିକ ଗାଇନୋଜେନେସିସ୍। ମାଇଟୋସିସ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ରେ ହଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଇଟୋଟିକ ଗାଇନୋଜେନେସିସ୍। Similarly, another phenomenon is androgenesis. तो ଯେମିତି ଆମେ ଗାଇନୋଜେନେସିସ୍ କରୁଛେ, ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଟା କେବଳ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଅରିଜିନ ରୁ ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେସିସ୍ ରେ କ'ଣ? ଆଣ୍ଡ୍ରୋ ମିନ୍ସ ମେଲ୍। ଓକେ, ମତେ 2 minutes ଟାଇମ ଦିଅ, ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପିଏ। Okay, similarly, androgenesis is what? The complete fish will come from the paternal origin. केवल male रू ही development of fish टा. Okay, so that is androgenesis. So androgenesis is the process of total inheritance from the paternal genome. Paternal माने father. So induction of androgenesis can produce exclusively male population. यदि आमे androgenesis process करिवा, सेठी केवल कोन ग्रो हेबे? Only male population in that aquaculture system. केवल सेठी male population ही grow हबो। एटा केतेबेले आमे करिबा? जेतेबेले आमे देखिबा गोटे male रे ही भलो character express करछि than the female. ओके, जदि गोटे मेल भलो क्यारेक्टर दउथिबो, माने मेल रो साइज अधिक थिबो, मेल किछि भलो हमकु प्रोडक्टिविटी दउथिबो, तो सेही केस रे हमें एंड्रोजेनेसिस करबा, जोटी हमकु फीमेल रो रिक्वायरमेंट ही नाही। ओके, तो केमिति करबा एंड्रोजेनेसिस? So this is, see the production of androgens, how it is doing. So this is a normal egg that is inactivated. एठी हमें egg को inactivate करबा, सेठी हमें काहा को inactivate करथले? sperm को inactivate करथले। So here egg is inactivated by either UV ray, X-ray or gamma ray. आमे ता ऊपर UV ray हो कि X-ray हो कि gamma ray पके कि egg रो क्रोमोसोम को नष्ट कर देबा, ताकू कहै जाय कोन? inactivated egg. एबे inactivated egg is allowed to fertilize with the sperm. एबे sperm, normal sperm सहित ताकू fertilize करबा। एबे egg रा क्रोमोसोम नाही, only क्रोमोसोम कहार अछि? sperm रो। तो एबे जाइगोट रे जो क्रोमोसोम टा आसीबो, कहार आसीबो? only sperm रो क्रोमोसोम आसीबो। ओके, एबे entry of the male gamete. So entry of the male gamete occurs that forms the zygote which is n here. कोन? गोटे सेट रो क्रोमोसोम रहउची, कारण egg रो क्रोमोसोम ऑलरेडी नष्ट होई जाईची। तो एबे ताकू हमें कोन करिवा? First polar body will be produced. First polar body produce होई कि पळेइबो। ओके, then comes to the first mitotic cell division हबो। एबे zygote टा divide हबो, redivide हेकी तो गोटे fish बनेइबो। तो first mitotic cell division हैला परे
आमे सिमिलरली तार न्यूक्लियर डिवीजन करैबा आ साइटोप्लाज्म डिवीजन को रोकी देबा जहा फल रे गोटे सेट ऑफ क्रोमोसोम एबे केतरा सेट ऑफ क्रोमोसोम हबो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम विल बी देयर सो दिस इज ए डिप्लॉयड एंड्रोजन फिश androgynous fish माने only male the chromosome is coming from the only male partner female partner ra chromosome ra eti kichi role nai so this is the way how we can make the androgenesis okay next is hybridization androgenesis and gynogenesis बुझियला yes ma'am next is hybridization process so what is hybridization process will make hybrid of what two different fish दीटा फिश रो हमें हाइब्रिड बनेबा ओके हाइब्रिड केमिति बनेबा लेट्स दीटा फिश रो किसी अलग अलग कैरेक्टर गोटे मेल फिश रो बहुत बड़ साइज दउची आ गोटे फिश रो माने माछर टेस्ट भलो अछि आमे चाहूचे तार गोटे हाइब्रिड बनेबा पई जो हाइब्रिड टा को हमकु साइज भी बड़ दबो आ फिश रो टेस्ट भी भलो दबो सेई केस रे विल गो फॉर द हाइब्रिडाइजेशन so the sperm and egg of two different fishes they are collected and fused to form a hybrid so this hybridization can be two types of hybridization can be interspecific and can be intraspecific interspecific माने कोन दीटा अलग अलग स्पेसीज भीतर तळे हाइब्रिडाइजेशन हबो ओके आमे रोहु सहित काटला को हाइब्रिड करेबा रोहु रो स्पर्म काटला रो एग को जतले फ्यूज करेबा सेटा कोन हबो इंटरस्पेसिफिक बिटवीन टू स्पीसीज ओके जतले रोहु रोहु भीतर आमे करेबा दैट इज इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन okay so two types of hybridization can be done intraspecific and interspecific hybridization and this hybridization can be also two types natural hybridization and artificial hybridization natural hybridization कोन आमे ताकू करिया दरकार नै नेचुरली ताको भीतर ही हाइब्रिड फॉर्मेशन होची ओके नेचुरली ही माने एक्वाटिक एनवायरनमेंट रे स्पर्म एंड ओवम से माने मिसी कि से माने गोटे हाइब्रिड फॉर्मेशन करंती सो नेचुरली दैट ऑकर्स आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कोन आमे निजे हाइब्रिडाइजेशन करेबा स्पर्म को कलेक्ट करिबा एग को कलेक्ट करेबा एंड आमे ताकू गोटे प्रॉपर ग्रोथ कंडीशन देकी आमे निजे ताकू हाइब्रिड बनेबा सेटा होची आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सो दिस नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन सब बेले कोन सब बेले ट्राई करे सेटा कोन इंट्रास्पेसिफिक हेबा पई किंतु आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आमे जोडा जबरदस्ती करूचे दैट कैन बी इंट्रास्पेसिफिक दैट कैन बी interspecific between the same species or between the different species see here interspecific and intraspecific hybridization between two related species breeds and strains it's termed as interspecific dita different breeds saite tele hybridization hoji that is the interspecific and when two genetically or geographically distinct population individuals of the same species bhitar jadi habo ta ko jae intraspecific hybridization that termed as intraspecific hybridization so when we are doing the hybridization jeta ame karuche that has additive effect of the trait माने एबे हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिड ता बनिला तार कैरेक्टर रे कोन रहइबो both parent रो कैरेक्टर रहइबो both male रो कैरेक्टर रहइबो both female रो कैरेक्टर रहइबो so we'll get superior character in the hybrid आमे हाइब्रिडाइजेशन करिया फल रे हमको superior character मिलुची तेनु आमे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करूचे okay so interspecific hybridization so basic benefit हमको कोठी मिलिबो interspecific hybridization रे किंतु interspecific hybridization करिबा भी बहुत डिफिकल्ट हमरो सक्सेस रेट इज very low in case of interspecific hybridization किंतु interspecific hybridization जदि सक्सेसफुल हेई गला that will give us more result हमको भलो रिजल्ट कोथरे दबो interspecific hybridization रे दबो so interspecific hybridization program is
conducted to obtain hybrid vigor or possibly attain the traits that are superior to the parents. तो हमको interspecific hybridization रे हमें जो hybrid पाउचे that will have the character superior character of both the male and female parents. Okay, so there is a formula that is heterosis. Heterosis is a heterosis कौन कहूची? Heterosis is the hybrid vigor. माने केते केते वेरिएशन होची, केते नुआ कैरेक्टर फॉर्मेशन होची इन दैट हाइब्रिड, ता कहा जाए हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस. तो हेटेरोसिस इज डिफाइंड एज द मीन रेसिप्रोकल F1 hybrid minus mean parents divided by mean parents into 100. I'm going to example never it see here. This is common carp and catla. So these are two parents, common carp and catla. Okay, and the mane hybrid between common carp and catla. See the third row, common carp male and catla female. सेई केस रे हमको केतरा इंडिविजुअल मिलुची 670. मीन वेट इज 670. माने से जो माछटा हाइब्रिड टा बनिला तार वेट केते आछी 670. किंतु कॉमन कार्प रो वेट केते 500. हम जति खाली कॉमन कार्प रो एवरेज वेट नेबा सेटा 500. काटला रो वेट केते 450. किंतु हम जति तांको भितरे बनौचे हाइब्रिड बाय टेकिंग कॉमन कार्प एज मेल काटला एज फीमेल, तार हाइब्रिड रो वेट केते रहउची 670. जदि हमें काटला को मेल नेबा उल्टा काटला को मेल और कॉमन कार्प को फीमेल, सेठू जो हाइब्रिड टा बनुची तार वेट होच 550. तो हमें हेटेरोसिस एटी केमती कैलकुलेट करबा? हेटेरोसिस इक्वल टू मीन वेट ऑफ पेरेंटल ग्रुप. ओके, तो मीन वेट ऑफ पेरेंटल ग्रुप केते आसीबो? मीन वेट ऑफ पेरेंटल ग्रुप माने 500 plus 450 divided by 2 which is coming 475. मीन वेट ऑफ हाइब्रिड, मीन वेट ऑफ हाइब्रिड एटी केते आछी 670 plus 550 divided by 2 which is 610. So heterosis एटी केते आसीबो इक्वल टू 610 minus 475 divided by 475 into 100 which is coming 28.4%. So एटी heterosis हमको केते मिलुची 28% माने वेरिएशन केते आछी हमको 28% वेरिएशन आछी. आ ए वेरिएशन टा ऑलवेज केते वेरी करिवो 0 रु 100. आइदर वेरिएशन किछि न भी हेइ थाए परे कि पूरा 100% वेरिएशन हेतिबो. ओके, सो हेटेरोसिस इज द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिड विगर और हमको केते वेरिएशन मिलुची. Okay, next we will go for the intraspecific hybridization. So here in intraspecific hybridization we will make the hybrid between the same species. Same species भितर हमें hybrid बनेवा. Okay, so this is the table which shows different hybrid of carps. Okay, different hybrid of tilapia. tilapia माने same species भितर hybrid बना होची. तो same species भितर हमें hybrid बनेवा. heterosis सेठी बेसी आसीबोनी काहेकि character is similar, both parent रे most of the character are similar. तेणु हमको variation बेसी आसीबोनी. variation कोथरे आसीबो interspecific hybridization रे आसीबो. Okay, next is sex reversal. What is sex reversal? The redirection of sexual phenotype during ontogenic development is known as sex reversal. Okay, आमे गोटे particular fish रो सेक्स को रिवर्स कर देबा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. माने से जेतले फर्टिलाइजेशन हेची सेटा गोटे मेल किंतु आमे ताको ता सेक्स को रिवर्स कर देबा माने फीमेल कर देबा. बाय हाउ विल मेक द सेक्स रिवर्सल? बाय यूजिंग द हार्मोन्स. आमे ताको हार्मोन्स इंजेक्ट करबा. जदि सेटा गोटे मेल थिबो आमे ताको फीमेल हार्मोन सब इंजेक्ट करबा माने प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन. आमे सेटा जदि ताको इंजेक्ट करबा देन इट विल बिहेव लाइक ए फीमेल. जदि जेटा गोटे फीमेल थिबो आमे ताको मेल हार्मोन इंजेक्ट करबा टेस्टोस्टेरोन. सो दैट माने तार जेनेटिक रे चेंज होउनी. जेनेटिक तार सेही मेल जेनेटिक्स ही रहउची. क्रोमोसोम इज लाइक मेल किंतु तार बिहेवियर विल बी फीमेल. केमिति? आमे ताको हार्मोन्स देकी तार बिहेवियर को चेंज करबा. तो सेटा को कहा जाय सेक्स रिवर्सल.
Okay, so how the mechanism of sex reversal is done? So the production of such single sex group population can be achieved. तो सेक्स रिवर्सल करिया फल कौन हम आम गोटे पॉन्ड पॉपुलेशन रे आइदर हमको मेल मिलबे और फीमेल मिलबे सबु मेल और सबु फीमेल इट कैन बी अचीव्ड बाय मैनिपुलेटिंग द गैमेट्स एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो आम तार गैमेट आउट डेवलपिंग एम्ब्रियो को मैनिपुलेट करबा केमिति मैनिपुलेट करबा बाय गिविंग द हार्मोन्स by giving the hormonal see here there are basically two approaches through which manipulation is done one is genetic approach and other is hormonal treatment आम हार्मोन दे परिबा और ताकू genetically करि परिबा so the genetic approach of sex manipulation for production of all female and male are sterile जदि आम genetically change करूचे genetics यूज करिकी सेक्स रिवर्सल करूचे that will produce sterile fish माने सी आगो को तांकर आउ रिप्रोडक्शन करि परिबनी कि तांकर आगो को आउ पॉपुलेशन ग्रोथ हेई परिबनी ओके so sterile fish through the induction of polyploidy which has been discussed in the section तो आमे ए जेनेटिक्स केमती चेंज करि परिबा आमे जो प्रीवियसली पढिले ट्रिप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी आमे केमिति बनौचे जो प्रोसेस रे बनौचे सेही प्रोसेस रे आमे तार जेनेटिकली चेंज करि परिबा आदर विल गेट द ओनली फीमेल और विल गेट द ओनली मेल आ हार्मोनल ट्रीटमेंट करके आमे केमिति करि परिबा बाय ट्रीटिंग द मेल एंड फीमेल हार्मोन जदि सेटा both steroid hormones and non steroid hormones can be used for the sex reversal process okay so if it is a male we'll give the estrogen and progesterone hormone so that it will behave like a female if it is a female we'll give the testosterone hormone so that it will behave like a male but tankar genetics re change houni genetics will be remain the same okay so these are this table this is different types of hormones which are injected into the body of the fish for the sex reversal ame kette bele kari pariba not during the adult semane jetale bahut body jibe adult hei jibe sei time re ame sex reversal kari paribani ko time re pariba just during the development jetale zygote ru embryo development houthibo aur embryo ru adult development houthibo ame sei time re hi sex reversal kari pariba sex reversal late hour re kari hoboni early stage of development रे हमें sex reversal करि परिबा एटा पढिबो तमे निजे next coming to the breeding माने will go for the breeding of two species of the fishes so selection of the species and trait तो breeding करिबारे what are different process what are different stages will first select the trait and species हमें को species को breeding करिबा सेटा को हमें select करिबा केमिति select करिबा on the basis of the trait ओके जार सुपेरियर ट्रेट थिबो आउ सेई ट्रेट को हमें नेकी ब्रीडिंग प्रोसेस करिबा ओके हाउ विल सिलेक्ट बाय टेकिंग द इंडिविजुअल फर्स्ट देन बाय टेकिंग द ट्रेट देन फैमिली सिलेक्शन प्रोजेनी टेस्टिंग फैमिली सिलेक्शन माने व्हेन द सिलेक्शन पोटेंशियल ऑफ पेरेंट्स फॉर ए कैरेक्टर माने से पर्टिकुलर से कैरेक्टर तांकर फैमिली माने बिफोर से इंडिविजुअल रो फैमिली माने ता पेरेंट्स रो अछि कि नाही ता ऑफस्प्रिंग रो अछि कि नाही थिले ही से पर्टिकुलर कैरेक्टर ता हमें जदी ब्रीडिंग करबा एक्सप्रेस हबो एमित नो कि से कैरेक्टर ता गोटे जनरेशन एक्सप्रेस करके तापर रही जाईची इट मस्ट बी कैरीड टू मल्टीपल जनरेशन से कैरेक्टर जदी मल्टीपल जनरेशन थिबो ही हमें से कैरेक्टर ता को चूज करि परबा फॉर द ब्रीडिंग प्रोसेस okay we'll go for the progeny testing ओके सो एई सब डिफरेंट क्राइटेरिया हमें यूज करके फर्स्ट हमें सिलेक्शन करबा कि को फिश को हमें ब्रीडिंग करबा ओके नेक्स्ट विल फॉलो द ब्रीडिंग प्लान हमें ब्रीडिंग ता करबा केंदी एनी हमें ताको मेटिंग केमती करबा मेटिंग मींस हाउ द स्पर्म एंड ओवम विल फ्यूज सो दैट इज द ब्रीडिंग प्लान ओके देन इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग जेतले ब्रीडिंग करि सरीबा हमकु जो ब्रीडिंग रो जो इंडिविजुअल गुडा मिलिबो जो फिश हमकु मिलिबो ताको हमें सिलेक्शन केमती करबा सिलेक्शन माने हमें जो पर्टिकुलर कैरेक्टर पई ब्रीडिंग करिचे सेही कैरेक्टर ता एक्सप्रेस होउतिबो ही जदी हमें सेही फिश को सिलेक्ट करबा देन हमें ब्रीडिंग प्रोसेस परे विल गो फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस वेयर विल सिलेक्ट द पर्टिकुलर फिश
by having a better character, a better trait. So this is the breeding technology. Okay, next will molecular markers and tools. Molecular marker kona? So these are some genes, genetic regions in the chromosome jota ki ame use kari pariba to study the differences between the two fish. ଆମର molecular marker ତୁମେ human case ରେ ବି ଜାଣିଥିବ molecular marker କୋଉଠି ୟୁଜ ହୁଏ ଆମେ ଦିଟା individual କୁ differentiate କରିବା ପାଇଁ molecular marker, various types of molecular marker ଆମେ use करू. कौन different type of molecular marker अछि AFLP, RFLP, RAPD. এটা শুনিଥିବ ତମେ RFLP, restriction fragment length polymorphism. এটা ତମେ କୋଉଠି ପଢିଛ DNA fingerprinting ରେ ପଢିଥିବ restriction fragment length polymorphism. तो এই molecular marker use हुए कौन ପାଇଁ ଆମେ ଦିଟା fish species को ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ difference ତାଙ୍କର gene ର difference କଣ ଅଛି study କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ will go for the RFLP. ଆମେ ତାଙ୍କର genetic କୁ study କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କର DNA କୁ ନେବା. अच्छा it's 8:30 ଥାଉ ନହେଲେ କାଲି ପଢିବା ମାର୍କର ବିଷୟରେ. ଓକେ yes ma'am, yes ma'am. ମ୍ୟାଡାମ କାଲି କ୍ଲାସ ହବ କି 7 ତାରିଖରେ ଅଛି କାଲି ତ ନାହିଁ ସରି ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ 7th ରେ ଅଛି. ମ୍ୟାମ୍ ତୁମେ ପଢ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଟିକେ ହଁ ଲେଖ 7978 ଲେଖିଲୁ 7978 78 7978 18 18 9869. नॉट ओनली माने एई सब्जेक्ट एक्वाकल्चर तुमर अलगा भी किछि डाउट थिबो जे तुम माने पचारि परिबो किछि प्रॉब्लम नाही. यस मैम मैम पढ़िला बेले हमर बहुत डाउट रहउछ एक्चुअली गोटे डाउट ही माने आउ गोटे यूनिट को पढ़ला बेले को देखो इंटरेस्ट तुमर एमिति सिलेबस अछि ना आ तुमको 2 घंटा रे एते सारा सिलेबस सारिया को पडुची तो सब मैडम ईच एंड मैडम आपण जहाँ भी पढ़ेले हमें बुझी पारलु आज को किछि प्रॉब्लम नहीं आहुरी बहुत गुडे पूर्व को जाईछि जोडा के हमें बुझी पारिनी. ओहो अलगा सब्जेक्ट सब यस मैम, माने अलगा पेपर सब. यस मैम. ଆକ୍ୱାକଲଚର ତ ବହୁତ ଇଜି ଚପ୍ଟର ଟା ଏତେ हां एटा ମାନେ इजी ବେଶୀ अछि बहुत हां एक्वाकल्चर मैडम भलो लागुछि. ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିक ଅଛି ଅଲଗା ପେपर ଯେମିତି ତୁମର କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ପେपर ଅଛି ତମେ ମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ପଚାରି ପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା. ମୁଁ ବି ଅଲଗା କଲେଜରେ ପଢାଏ ପିଲାଙ୍କୁ. यस मैम. ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ମଲିକୁଲାର ମାର୍କର୍ସ କାଲି ପଢିବା ହଁ. ମୋ ତଣ୍ଟି ବି କାଟିଲାଣି ଏତେ ଟାଇମ ଚିଲେଇଛି. यस मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच मैम. मैम. ଠିକ ଅଛି କାଲି ନାହିଁ ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କେବେ ଅଛି ମଣ୍ଡେ 7th मैम. 7th ମାନେ ମଣ୍ଡେ ନା यस मैम. ଆଜି 4th 5th 6th ହଁ ଠିକ ଅଛି ओके विल मीट ऑन मंडे ओके ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक गुड नाइट मैम. यू गुड नाइट.